माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी। Yes, he is coming. We is with chairman. Sri Arjun Munda to move a motion for consideration of the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022. उपसभापति महोदय, मैं आज अनुसूचित जनजाति संबंधित जो विधेयक इस सदन में प्रस्ताव के रूप में लाया गया है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस पर विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी, इस पे बोलना चाहेंगे, इस बिल के बारे में बताना चाहेंगे कुछ? अभी स्टार्ट हो जाए। मोशन मूव्ड। सो माननीय सदस्य, माननीय श्री जीवीएल नरसिंह राव टू स्पीक इन तेलुगु। सर, thank you, sir. Thank you for the opportunity. The present Constitution Amendment Bill, I'm speaking in respect of the bill pertaining to Tamil Nadu. This provides for inclusion of two communities, Narikoravan and Kurivekkaran communities. These two communities are being included in the constitutional, these are being included in the list of scheduled tribes from Tamil Nadu by making an entry in the Constitution Scheduled Tribes Order of 1950. So, before let me comment on the bill and the communities that are being included in this and how significant it is towards social empowerment and social inclusion. So these two tribes, they are in very, very small number. They hardly account for about 27,000. It's a very small community of 27,000 people. But by including even such a small community through an amendment of the constitutional order, this government is clearly sending a signal to the people of this country that Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas is an egalitarian principle, and it is not anything looking at vote bank politics, because for a state of the size of Tamil Nadu, which has maybe 7 crore people, a very large state, 27,000 is a very small number. But this particular amendment bill clearly shows is an expression of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to the welfare of the marginalized, welfare of sections which have so far been hitherto been neglected. Sir, while I congratulate the Honorable Prime Minister, Honorable Minister for Tribal Affairs, because we are seeing a large number of such constitutional amendments in this House. Only a week ago, I think we saw inclusion of certain communities in the state of Uttar Pradesh in the list of scheduled tribes. They have been, because they are very
those communities are considered more appropriate to be in the list of STs. They have been deleted from the list from the SC order and included in scheduled tribes. Today we are looking at 3 such constitutional amendment bills in respect of the states of Tamil Nadu, Karnataka and Himachal Pradesh. So I would like to once again emphasize the commitment of the Prime Minister, Honorable Prime Minister and the government to the welfare of marginalized and vulnerable sections. Sir, in respect of my home state of Andhra Pradesh, I would like to make a few points which people will better understand, appreciate in my native language, sir. Sir, Andhra Pradesh lo kuda మనం చూసాం ఏ రకంగా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక ఏకలవ్య స్కూల్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కు మంజూరు చేసింది. ఏ రకంగా ప్రధానిగా మొదటిసారి వాజ్పేయి గారు 1998 నుంచి 2004 వరకు ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో మొట్టమొదటిసారిగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ పేరుతో కొత్త మంత్రిత్వ శాఖని ప్రారంభించి ఏ రకంగా ఆదివాసులకి ట్రైబల్స్కి న్యాయం జరగటం కోసం వారి అభివృద్ధి కోసం ఏ రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేశారో ప్రపంచం చూస్తోంది. ఈరోజు మనం అత్యున్నత దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత పదవిలో కూడా ఒక అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక మహిళా మూర్తిని దేశ రాష్ట్రపతిగా కూడా మనం మొట్టమొదటిసారి ఒక గిరిజన మహిళను ఎన్నుకోవటం జరిగింది. ఇది అత్యంత దేశమంతా కూడా గర్వించదగినటువంటి విషయం అని తప్పక చెప్పాలి. ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక బోయా వాల్మీకి వర్గానికి కూడా వారిని కూడా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ జాబితాలో చేర్చాలనేటువంటి అనేక సంవత్సరాలుగా దశాబ్దాలుగా ఒక డిమాండ్ ఉన్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా వారిని ఆదివాసుల జాబితాలో చేర్చాలని చెప్పి ఈ వర్గాల నుంచి అనేక సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ ఉన్నది. కర్ణాటకలో వాల్మీకిలకి ఇటువంటి బోయా వాల్మీకిలకి ఎస్టీ స్టేటస్ ఉన్నది. అలాగే కొన్ని జిల్లాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వారికి ఎస్టీ స్టేటస్ ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇది లేదు. సో దీన్ని గతంలోనే రిఫరెన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. దీనిపై మరొక్కసారి పునర్విచారణ చేయాలని నేను మంత్రి గారిని స్పష్టంగా కోరటం జరుగుతోంది. ఇది కాకుండా అనేక పార్టీలు వాగ్దానాలు చేస్తాయి కానీ బీజేపీ మాత్రమే న్యాయం చేస్తుంది. బీజేపీ మీరు చూశారు ఈ మధ్య కర్ణాటకలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీగా అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఎస్టీ వర్గాలకు మేము చేరుస్తామని చెప్పామో వారందరినీ చేర్చడం జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా అది చేయటం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వాలు ఉన్న చోట రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో 2 చోట్ల కూడా ఎక్కడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో సామాజిక న్యాయం కూడా రెట్టింపు స్థాయిలో జరుగుతోందన్న వాస్తవం అన్ని సామాజిక వర్గాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఒక్కొక్కసారి ప్రజల్లో అపోహలు అవగాహన రాహిత్యం కారణంగా కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాటిని మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి. మన ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ అన్నవి ఏ సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వాలన్నా కూడా అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ యొక్క అమెండ్మెంట్ ద్వారానే మార్పు ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది. కానీ వెనుకబడిన కులాల విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర జాబితా వేరు, కేంద్ర జాబితా వేరు. ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు మాత్రం ఎవరికి సామాజిక న్యాయం చేయాలన్నా ఏ వెనుకబడిన కులంగా ఎవరికైనా గుర్తింపు ఇవ్వాలన్నా అది కేంద్ర ఉద్యోగాల్లో కేంద్ర విద్యా సంస్థల్లో అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. కానీ అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో అయితే వెనుకబడిన కులాలకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వవలసిన బాధ్యత ఇచ్చే అధికారం కూడా కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే ఉన్నాయి. కానీ అనేక సందర్భాల్లో
మరి కొన్ని పార్టీలు రాష్ట్రాల్లో ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడం కోసం మరి బీసీ రిజర్వేషన్లు రాష్ట్రంలో ఇవ్వడానికి కూడా కేంద్రంతో బాధ్యత అని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో కాపు సామాజిక వర్గానికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటి అపోహలు కలుగజేయటం జరిగింది. నిన్న ఒక సమాధానంలో పార్లమెంట్లో స్పష్టంగా నాకు చెప్పడం జరిగింది, కాపు సామాజిక వర్గానికి బీసీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోనిది కాదు, అది రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలకు రిజర్వేషన్ కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కల్పిస్తుంది అని నిన్న స్పష్టం చేయటం జరిగింది. సో ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రజలందరికీ ఒక అవగాహన ఉండాలన్న విషయంలో ఇది చెప్పడం జరుగుతోంది. అలాగే ఆదివాసుల అధికారాల విషయంలోకి వస్తే పొలిటికల్ రిజర్వేషన్, మనం రాజ్యాంగం పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు కల్పిస్తోంది. కానీ అనేక ప్రాంతాల్లో ఎస్టీ మహిళలని వివాహం చేసుకొని అనేక మంది వారి సతీమణులు వారి భార్యలు కూడా పార్లమెంటు సభ్యులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైనప్పటికీ కూడా నిజమైన రాజకీయ సాధికారత వారికి దక్కకుండా వారిని వివాహం చేసుకున్నటువంటి మరి ఇతర కులాల వారు ఇటువంటి రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ని ఇండైరెక్ట్గా అనుభవిస్తున్నారు. దీన్ని ఖచ్చితంగా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే people belonging to non-tribal castes, non-tribes, marry tribal women, make them MLAs and MPs, and indirectly enjoy the benefits of political empowerment. So, real tribal women kante kuda వారిని వివాహం చేసుకున్న వారే అధికారం చలాయిస్తున్నటువంటి సందర్భాలు అనేక విధాలుగా చూస్తున్నాము. దీన్ని మనం ఏ రకంగా అరికట్టవచ్చో దీన్ని కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. అలాగే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీస్ని వారికి సంబంధించినటువంటి భూమి కానీ ఆస్తుల్ని కానీ నాన్ ట్రైబల్స్ కొనుక్కునేటువంటి ఒక ప్రొవిజన్ లేదు. కానీ ఇదే మార్గం ద్వారా ఆదివాసీ మహిళల్ని వివాహం చేసుకొని వారి ఆస్తుల్ని కూడా ఇండైరెక్ట్గా పేరు వారి ఆదివాసీ మహిళల పేరుతోనే ఉంటుంది ఆస్తి, కానీ దాన్ని వివాహం చేసుకున్నటువంటి పురుషుడు పూర్తిగా దానిపై ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ రియల్ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళు పొందుతున్నారు. దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని రియల్ బెనిఫిషియరీస్ ఆఫ్ ఇంటెండెడ్ బెనిఫిట్స్ ట్రైబల్సే అవ్వాలి, కానీ ఎవరు అన్యాయం చేయకూడదన్నది ఖచ్చితంగా మనం గమనించవలసిన ఒక అంశంగా మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అలాగే రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్, ట్రైబ్స్కి మనం రిజర్వేషన్ ఇచ్చాం. వారికి మా రాష్ట్రంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్లెయిన్స్ వర్సెస్ హిల్లీ రీజియన్, ట్రైబ్స్ ప్లెయిన్స్లోనూ ఉన్నారు, హిల్లీ రీజియన్లోనూ ఉన్నారు. కానీ ప్లెయిన్స్లో మైదాన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులంతా కూడా మాకు ఈ ప్రాంతంలో ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానం కూడా ఒక అసెంబ్లీ స్థానం కానీ పార్లమెంటు స్థానం కానీ మా ప్రాంతంలో మరి రిజర్వేషన్ దాన్ని కల్పించలేదు. దీనివలన పెద్ద సంఖ్యలో మైదాన ప్రాంతంలో మేము ఉన్నప్పటికీ కూడా మాకు సరైనటువంటి అవకాశాలు ఎంపవర్మెంట్ దక్కటం లేదు అన్నటువంటి వారి ఒక కంప్లైంట్ చాలా విరివిగా వినిపిస్తుంది. దీనిపైన కూడా సంబంధిత మరి ట్రైబల్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నది కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ యొక్క ప్రధాన అంశం కనుక I would like to draw even the attention of the Honorable Minister for Tribal Affairs to the reservation of seats for tribals in plain areas versus hilly areas. So what are the current guidelines being used by the delimitation commission at the time of reservation of seats? ఇది కూడా ఒక ప్రధాన అంశంగా దీన్ని కూడా గమనించాలి అని చెప్పి మంత్రి అర్జున్ ముండా గారి దృష్టికి తీసుకురావటం జరుగుతోంది. ఇదే కాకుండా కొన్ని చోట్ల ట్రైబల్స్ సంఖ్య తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల వెలమ కమ్యూనిటీ పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. సో వారు అందులో కొన్ని వర్గాలు బ్యాక్వర్డ్ రీజియన్ అయినప్పటికీ వారు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా
ఆ సీట్లని, అసెంబ్లీ సీట్లని ట్రైబల్స్కి రిజర్వ్ చేయటం జరుగుతోంది. సో వారు మాకెప్పుడు సామాజిక, మేము వెనుకబడిన కులమే, పొలినాటి వెలమ్మ, ఇతర వేరు కులాలు, వారందరూ మేము బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ అయినా మాకెప్పటికీ ఎమ్మెల్యే సీటుగా కంటెస్ట్ చేసే అవకాశం లేదు. మా ప్రాంతంలో ట్రైబల్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మాదెప్పుడు ట్రైబల్స్ రిజర్వ్ చేస్తున్నారు, దీని వెనుక ఏదో రాజకీయ ఆలోచన ఉంది, రాజకీయ దురాలోచన ఉంది అన్నటువంటి ఒక భయాన్ని, అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భంలో I would like to request Honorable Minister to in future consider the guidelines being adopted by the delimitation commissions in reservation of seats for tribes and scheduled castes, and whether that is being done in accordance with any valid statistical data, or is there a political motive behind this? In some areas there is a political angle. This is what some people, some communities allege. So kabatti ఈ విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిందిగా, రిజర్వేషన్ అన్నది ఉద్యోగాల్లో, విద్యా సంస్థల్లోనే కాకుండా మనం రాజకీయ పరంగా కూడా వారికి మరి రిజర్వేషన్ కల్పించాం కనుక ఈ విషయంలో కూడా వారికి న్యాయం జరగాలి అని చెప్పి నేను మంత్రి గారిని కోరుతూ, ఓవరాల్గా నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో ట్రైబ్స్కి ఒక కొత్త ఎంపవర్మెంట్ దక్కటమే కాకుండా ఒక కొత్త ఉత్సాహం కూడా వారిలో కలిగింది. సో ట్రైబల్ యూత్, ట్రైబల్ విమెన్, వీరందరూ కూడా ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్లో ముందుకు వస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఇంకొక సోషల్ యాంగిల్ కూడా ఈ విషయంలో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. దీనిలో రిలీజియన్ సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషనల్ కొంతమంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు, కొంత ప్రలోభాలతో రిలీజియస్ కన్వర్షన్ కూడా జరుగుతోంది ట్రైబ్స్లో. ఆ రిలీజియస్ కన్వర్షన్, సర్టన్లీ our constitution allows religious conversion on voluntary basis. కానీ ఇక్కడ I'll just take a minute, honorable chairman, కొంత coercive measures ద్వారా, ఫైనాన్షియల్ ఇండ్యూస్మెంట్ ద్వారా కూడా ట్రైబల్ కన్వర్షన్స్ జరుగుతున్న సందర్భంలో దీనిపైన కూడా ట్రైబ్స్ కూడా మరి కన్వర్షన్కి వ్యతిరేకంగా, కన్వర్షన్ జరిగితే రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అన్న దానిపైన ఒక ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం ఏ ధర్మంలోకి, ఏ మతంలోకి మారినా వారి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కొనసాగుతుంది అన్నది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నిబంధన. దాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించవలసిందిగా మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను. అలాగే వన్ ఫైనల్ పాయింట్, there is an attempt to create what is called a tribal religion. A lot of people are being forced to think that they belong to a separate religion, when in fact most of them practice Hinduism as a religion. So I think there is an attempt by certain vested interest groups to really change their categorization. So I would like Honorable Minister also to examine this issue and ensure that a complete social harmony among scheduled tribes in the country. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you. Honorable Sri Rajya Krishnaiya to speak in Telugu. Bill, Chhattisgarh. Tamil Nadu. Respected Vice Chairman, ఈ బిల్లును I want to speak in Telugu. I also protect. ఈ బిల్లును మా పార్టీ తరపున పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాం. We are supporting this bill outrightly. We also suggest the government, ఎందుకంటే ఈ బిల్లులో ఒక తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి ట్రైబల్స్ను ఆ ప్రభుత్వం అన్ని కోణాలలో ఆలోచించి రికమెండ్ చేసింది, అందుకు సమర్థిస్తున్నాం. అయితే ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని కులాలను ఎస్టీ జాబితాలో కలపాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారు, రికమెండ్ చేశారు, ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. వాటిని కూడా తొందరలోపలనే అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ పరిశీలించిన తర్వాతనే వాళ్ళకు ఎలిజిబుల్ ఉందా లేదా అనే అంశాన్ని పరిశీలించి వాటిని కూడా కలిపితే ఒకేసారి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని మొట్టమొదట బీజేపీ పార్టీని, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మేము అభినందిస్తున్నాం. ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి రాష్ట్రపతి పదవికి ఒక ఆదివాసీ
గిరిజన మహిళను ఎలవేట్ చేసి ఆమెను రాష్ట్రపతి నియమించినందుకు ఇది ఒక చరిత్ర, ఇది చాలా గొప్ప అంశం. దీనివల్ల దేశ సమగ్రతకు, జాతీయతకు, ట్రైబల్స్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, మోరల్ బూస్ట్కు ఎంతో ఉపయోగపడ్డది. మేము కూడా అందరితో సమానంగా అత్యున్నత పదవులను స్వీకరించడానికి అవకాశం ఏర్పడ్డదని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అందుకు బీజేపీ పార్టీని నేను అభినందిస్తున్నా. ఇదే సమయం లోపల ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ దృష్టికి ట్రైబల్ బిల్ అమెండ్ చేస్తున్న ఈ సందర్భంగా ట్రైబల్స్ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం తర్వాత కూడా ట్రైబల్స్లో ఇంకా అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారు విద్యాపరంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ అనేక సమస్యలతోటి, ఎందుకంటే తరతరాలుగా వాళ్ళను పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అవిద్య, అజ్ఞానము, అమాయకత్వము, మూఢనమ్మకాలు, మూఢ విశ్వాసాలు, ఆచార సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళను తరతరాలుగా వస్తే పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అంశాలు. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ జాతుల లోపల, ట్రైబల్స్ లోపల పేదరికం ఉంది, అన్సైంటిఫిక్ ఆచార ట్రెడిషనల్స్ అవన్నింటినీ కూడా తొలగించవలసినటువంటి బాధ్యత మన నవనాగరిక సమాజంలో, ఆధునిక సమాజంపై బాధ్యత ఉంది. ప్రభుత్వ పరంగా శాస్త్రీయమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు, అదేవిధంగా పేదరిక నిర్మూలన కోసం మనం వాళ్ళ లోపల పేదరిక నిర్మూలన కోసం విద్యను, ఆరోగ్యాన్ని, ఇవన్నింటినీ కూడా అనేక అంశాలను మనం వాళ్ళకు ఆధునీకరణ చేసేటట్టు చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ప్రధానంగా విద్య. ట్రైబల్స్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకలవ్య పాఠశాలలు పెట్టింది, అది చాలా అప్రిషియేట్. కానీ 50% టీచర్ పోస్టులు భర్తీ కావడం లేదు. అదేవిధంగా ట్రైబల్ ఏరియా లోపల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్కూళ్ళు రిమోట్ విలేజ్, ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండడం వల్ల అక్కడ టీచర్లు సరిగ్గా పోవడం లేదు. వాళ్ళ టీచర్లకు కొద్దిగా అదనపు ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చినట్టయితే, సాలరీస్ లోపల ఎట్లయితే డాక్టర్లకు అది ఇతర ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నారో అదేవిధంగా టీచర్లకు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కొంత ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు కంపల్సరీ ట్రైబల్ ఏరియా స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పడానికి వీలవుతుంది. పేరుకు స్కూల్ ఉంటుంది కానీ టీచర్లు రారు. దీంతో ట్రైబల్స్ లోపల ఎడ్యుకేషన్ను ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రభుత్వము ఇంకా అనేకమైనటువంటి చర్యలు, హైయర్ ఎస్ఎస్సి వరకు స్కూల్లో డ్రాప్అవుట్, కాలేజ్ డ్రాప్అవుట్, యూనివర్సిటీ వరకు రావడం లేదు. కాబట్టి ఏ విధంగా ట్రైబల్స్ యొక్క హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అప్ టు పీజీ వరకు రీచ్ అవుతారు, అప్ టు ప్రొఫెషనల్ కోర్సు డిగ్రీ వరకు రీచ్ అవుతారు ఇంజనీరింగ్లో అనే అంశం మీద, దీని మీద ఒక్కసారి కేంద్ర ప్రభుత్వము రివ్యూ చేసి ఒక కమిషన్ వేసి, ఆ కమిషన్ ద్వారా, ఎందుకంటే గ్రామాలలో, తాండలల్లో, గూడెలలో పోయి చూసినట్టయితే 10th వరకు చదువుతున్నారు అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు. దానికి కారణం 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ప్రభుత్వ పరంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చిన స్కాలర్షిప్ ఇస్తే సరిపోదు, వాళ్ళ గర్ల్స్కి హాస్టల్ సపరేట్గా కాలేజ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ పెట్టాలి. ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాలేజ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉన్నాయో, జాతీయ స్థాయిలో గర్ల్స్కు హాస్టల్ పెడితే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, చదువుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర మంత్రివర్యులు గారు దీని మీద ఆలోచన చేసి, ఎందుకంటే ట్రైబల్స్ భారతమాత ముద్దు బిడ్డలు, వాళ్ళందరినీ ఎదిగిన సమాజంతో సమానంగా వాళ్ళని డెవలప్ చేయవలసినటువంటి సామాజిక నైతిక బాధ్యత ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలపై ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం దీన్ని చిత్తశుద్ధితో, ఒక రాష్ట్రపతిని చేసినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉన్న 12 కోట్ల మంది ట్రైబల్స్ను 75 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పటికైనా సర్వతోముఖ అభివృద్ధికి, ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్కు, సమగ్రమైన అభివృద్ధికి, డెవలప్మెంట్కు చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ట్రైబల్స్ లోపల ఇంట్రిన్సిక్ తెలివితేటలు, సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, తెలివితేటలు, పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి తెలివితేటలు అపారంగా ఉన్నాయి. ఆ తెలివితేటలను ఈ సమాజ అభివృద్ధికి, దేశాభివృద్ధికి వినియోగించుకోవాలనే కోణంలోనైనా చూడాలి. ఆ కోణంలో చూసి వాళ్ళ యొక్క శక్తియుక్తులు ఈ భారతీయ సమాజ అభివృద్ధికి, భారతదేశాన్ని అగ్రదేశంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి విద్యాలు ప్రతి ఒక్క ట్రైబల్కు మంచిగా హాస్టళ్ళు పెట్టి, గురుకుల కాలేజీలు పెట్టి, డిగ్రీ కాలేజీ వరకు పెట్టి వాళ్ళకి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి డ్రాప్అవుట్ కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్ల రేటు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి.
ప్రీ మెట్రిక్ కానీ పోస్ట్ మెట్రిక్ కానీ వాటిని కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ట్రైబల్స్కు పరిశోధనాత్మక కోర్సుల లోపల కూడా లిమిటెడ్గా ఫెలోషిప్ ఇస్తున్నారు. సాచ్యురేషన్ పద్ధతి మీద టోటల్ ఫెలోషిప్ ఇస్తే వాళ్ళు మరింత ముందుకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక రెండో విషయానికి వస్తే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. హెల్త్కి వస్తే ఇప్పటికీ వాళ్ళు గ్రామీణ వైద్యము సాంప్రదాయక వైద్యం మీద ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి హాస్పిటల్స్ కానీ మందులు కానీ వాళ్ళకి రీచ్ కావడం లేదు. రిమోట్ ఏరియాలో ఉండడం, రహదారులు లేకపోవడం, రోడ్లు లేకపోవడం, డాక్టర్లను పెడితే వాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం, అక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో పోయి వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఇప్పటికీ ట్రైబల్స్ అంతా కూడా పాత వైద్య విధానాల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ పద్ధతిని తొలగించి వాళ్ళకు కూడా శాస్త్రీయమైన అప్డేట్ ఆధునిక వైద్య విధానాన్ని అందించడానికి డాక్టర్లు అందరూ కూడా రీచ్ అయ్యేటట్టు రోడ్డు రవాణా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా డాక్టర్లకు కొద్దిగా ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి బాగా పనిచేసి మన గిరిజన తెగన మొత్తం వాళ్ళని ఆధునిక వైద్యంతో ఆరోగ్యవంతులను చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. విద్య వైద్యం అనేది ప్రాథమిక బాధ్యత, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి బాధ్యత. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అదేవిధంగా పావర్టీ ఇప్పటికీ 75 ఏళ్ల స్వతంత్రం తర్వాత కూడా గిరిజన సోదరులు సాంప్రదాయక పద్ధతుల మీదనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. వాళ్లకు ఆధునిక వ్యవసాయ పరికరాలను అందియాలి, యంత్రాలను అందియాలి. సబ్సిడీ మీద, పూర్తి సబ్సిడీ మీద ఇచ్చినట్టయితేనే వాళ్ళ ట్రాక్టర్లు కానీ ఆధునిక యంత్ర పరికరాలు కానీ ఈ ఆధునిక పద్ధతులు మేళవించడం కానీ సైంటిస్టులు, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్టులు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మమేకమైన ఎదిగిన సమాజంతో వాళ్ళను మమేకం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. అప్పుడే వాళ్ళ యొక్క పేదరికం పోతుంది. రెండవది మార్కెట్. వాళ్ళకు మార్కెట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చాలా జరుగుతుంది. గిరిజనుల సోదరులందరూ కూడా వాళ్ళకు మార్కెట్కు రారు. అక్కడ లోకల్ మార్కెట్ వాళ్ళందరినీ పెట్టి వాళ్ళ యొక్క దోపిడీ చేసి తక్కువ ధరకు కొని ఎక్కువ వీళ్ళకు లాభాలు, మధ్య మిడిల్ మ్యాన్ లాభాలు పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వాళ్ళ యొక్క మార్కెట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అరికట్టడానికి కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నా. అదేవిధంగా లాస్ట్ 2 minutes లోపల ఒడగొట్టేస్తా. రెండవది ట్రైబల్, ఇప్పుడు ప్రభుత్వము విద్యా ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి ప్రకారం ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ట్రైబల్స్కు చాలా తక్కువ పార్టిసిపేషన్ ఉంది. ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా రిజర్వేషన్లు ఎస్టీలతో పాటు ఎస్సీ ఓబీసీలకు కూడా పెట్టినట్టయితే మరింత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. అదేవిధంగా జ్యుడిషియల్ లోపల సుప్రీంకోర్టులో, హైకోర్టులలో ఎక్కడ కూడా ఎస్టీలు లేరు, ట్రైబల్స్ లేరు. కాబట్టి అక్కడ కూడా జ్యుడిషియల్ లోపల, హైయర్ జ్యుడిషియల్ లోపల కూడా ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు పెట్టి అలాగే ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి మనవి చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ట్రైబల్స్ ఇప్పటికీ ఫారెస్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఒత్తిడికి లొంగుతున్నారు. स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर चेयरमैन डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चेयरमैन सर, कोविड-19 महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल से भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती दिख रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, होल ऑफ गवर्नमेंट
एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.2 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार सतत कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है। उसे आगे भी हम चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारे दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। धन्यवाद। श्री राघव चड्ढा, वन से प्लीज सर सेंड योर स्लिप एंड टेक योर सीट। मिस्टर राघव चड्ढा, आई विल कम टू यू। श्री राघव चड्ढा। सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को क्लैरिफिकेशन पूछने का मौका दिया। सर, मेरा 267 भी इसी विषय पे था और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो आज सदन में बयान दे रहे हैं उनके बयान का स्वागत करते हुए दो बातें रखना चाहता हूं। सर, पहली चीज, सर, चाइना से जो वीडियोस और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी, वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो भी हो उसके बाद भी ये वायरस लगातार हमला कर रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम
जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, the last line of the minister's statement conveys something. Our enemy is changing with time, and we need to continue our collective fight against it with perseverance and determination. Yes, sir. The pandemic has infected people after 2 doses of vaccine and 1 more booster. So I think whether the government is prepared to face the incoming pandemic, the nature of it, and the methods to face it, and like the mostly since it is related with the lungs, are we prepared with enough oxygen, remdesivir or anything of that sort, whether the government is prepared or taking efforts. Thank you. Mohammad Nadimal Haq. Thank you very much, sir. Sir, the Ministry of Health is doing a very commendable job and is very appreciated that they are taking these steps. But I have a few suggestions, sir. One is that there should not be any shortage of oxygen. I am sure all the ministry, state and center both are looking into it. Sir, the migrant population last time suffered a lot. Steps should be taken so that the scenario is not repeated. Sir, there should be some increase in health professionals and also some financial help should be given to states. At last, I say, we are all responsible citizens, sir. It is our duty also to make sure that all the COVID protocols are followed. Just, sir, is baar mat boliega ki is baar thali bajao. Thank you, sir. I can tell you, honorable members, during my 2 visits abroad, as Vice President and Chairman of this House, the good work of the Union Health Minister fell in my ears. It was very wholesome to note that imagine the largest democracy on earth, more than 2 billion vaccinations, all available to the citizens by way of certification digitally, something which even the most developed nation has not been able to achieve. Mr. Vasan. Sir, very thankful to the government and the minister, sir, when even wealthy countries with a population of 20-25 crores were struggling to combat with COVID-19. India with 130 crores, sir, dream come true. We were able to have COVID settled together with all our council of other states, sir. This time, sir, I would kindly like to tell the minister, sir, last time in COVID, even in cities where educated people were there, we were not able to follow the awareness given by the government, sir. This time, both, not only in the cities, also in the district and villages, awareness should be more, sir, so that the people compulsorily follow guidelines. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन सर, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसके पार क्लैरिफिकेशन पूछते हुए हमारे चड्डा जी ने कहा कि जो चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज़ बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। तीसरा, अभी प्रिकॉशन जो हमारे तिरुचि शिवाजी ने कहा कि क्या तैयारी है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी,
हमने आज से नहीं, कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं ऐसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनलेस अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन साहब कि ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी। और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार पुरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन पुरियस हो। ये 2 काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। Honorable members, COVID virus and COVID menace is non-discriminatory. It favors none. When COVID virus is non-partisan, our comeback battle has to be non-partisan. This morning, I had sought your indulgence that members of parliament have a decisive role to play in motivating the people so that we are prepared more than ever before. Returning to the discussion, Shri B. Lingaya Yadav.
Thank you, Chairman sir. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment 2002 Bill ku the government of Tamil Nadu requested to include sound aa raha hai idhar include Marikuvaran along with Karivikaran Kurivikaran communities, the list of scheduled tribes in respect of the state of the Tamil Nadu. On the basis of the recommendation of the state of Tamil Nadu and after consultation with the Registrar General of India and the National Commission, sir, this bill ये रखे इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं सर. बाद में हमारा తెలంగాణ में भी తెలంగాణలో ఇదే విధంగా షెడ్యూల్ ట్రైబ్లకు సంబంధించినటువంటి సంఖ్య గతంలో ఎప్పుడో 2011 సెన్సస్ ప్రకారం చట్టబద్ధత చేశారు. ఇప్పుడు ఆ జనాభా పెరిగిందని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు మరి గత అనేక సంవత్సరాల క్రితం 6% నుంచి 10%కి ఈ యొక్క ట్రైబల్స్ సంఖ్యను ఈ యొక్క పర్సెంటేజ్ను పెంచాలని చెప్పి అసెంబ్లీ నుంచి తీర్మానం చేసింది సార్. అయినా కూడా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రివర్యులు ఇది వారికి గమనించుకోవాలి, ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోరుతున్నది సార్. ఇదే కాకుండా కొన్ని ఈ ఎస్టీ కులాలను కలపటం తీసివేయటమే కాదు, వాడికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు కూడా ఫెసిలిటీస్ కూడా కల్పించాల్సిన అవసరము కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఉన్నది సార్. ముఖ్యంగా ఈ షెడ్యూల్ ట్రైబుల్లో కొన్ని కులాలు కలపటం కానీ తీసివేయటం కానీ ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అవకాశం ఇస్తే అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కాబట్టి వారి బాగోగులు తెలిసిన ప్రభుత్వంగా మరి వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయం అయితే ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి తమరి ద్వారా ప్రభుత్వానికి మనవి చేస్తున్నాం సార్. తర్వాత ఈ ఎస్టీ గురుకులాల విషయంలో కూడా వారి కులాలను పెంచడం కాదు, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఈ యొక్క గతంలో 90 గురుకులాలు ఉంటే దగ్గర 185 గురుకులాల వరకు కూడా పెంచి వాళ్ళకు మెను పెంచి మరి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఎస్టీ పిల్లలను చదివించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ డ్రాప్ అవుట్స్ అనే వాళ్ళు లేకుండా తండాల నుంచి మారుమూల గ్రామాల నుంచి గోండు గూడాల నుంచి మరి అన్ని చెంచు జాతుల వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొచ్చి చదివించేటువంటి కార్యక్రమం ఇవాళ అక్కడ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు సార్. వాళ్లకు ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ట్రైబులకు సైనిక పాఠశాలలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ తెలంగాణలో. ఇదే కాకుండా ఈ యొక్క బంజారా భవనాలు కూడా ఒక్కొక్క జాతికి 50 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఈ ఆదివాసులకు కానీ బంజారాలకు కూడా హైదరాబాద్లో భవనాలు నిర్మించి ఆత్మగౌరవ భవనాలు నిర్మించి వారి పిల్లల చదువుల కోసం అక్కడ ఈ యొక్క భవనాలు ఏర్పాటు చేసి హాస్టల్ పెట్టారు సార్. ఇట్లనే మా రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాల్లో కూడా ఈ ఎస్టీల యొక్క విద్యకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది సార్. అట్లనే ఈ తండాలకు డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా మిషన్ భగీరథ ద్వారా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతున్నాం సార్. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కూడా ఈ విద్యను మేము ఎట్లా పెట్టామో దేశవ్యాప్తంగా కూడా అమలు చేయాలి సార్. అట్లనే 24 అవర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ యొక్క తండాలకు ట్రైబల్ ఏరియాకు ఇచ్చి ఇరిగేషన్ విషయంలో కానీ త్రాగునీరు విషయంలో కానీ తెలంగాణలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సార్. ఏ రకంగానైతే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఎస్టీల యొక్క అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తుందో దేశం అంతా కూడా చేయాలనేది మా డిమాండ్ సార్. ఇదే కాకుండా మా ఇంతవరకు నరసింహరావు గారు చెప్పింది మా రాష్ట్రంలో ఆడ మనిషికి పెళ్లి చేసుకుంటే వర్తించదు సార్, మగ మనిషి పెళ్లి చేసుకుంటేనే ఎస్టీల కింద వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇంకా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ లో కూడా ఎక్కువ నిధులు కేటాయించి ఎస్టీలను ఆదుకోవాలని మా యొక్క బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. శ్రీమతి మౌసమ్ నూర్. Thank you, Deputy Chairman, sir. And I thank my party, All India Trinamool Congress, for this opportunity. I rise to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. This amendment adds
37 under Tamil Nadu to the schedule in Constitution Scheduled Tribes Order 1950, including Narikovaran and Kurivikaran tribes to the list of STs. An estimated 30,000 individuals or 8,500 families in Tamil Nadu belong to this community, forming under 0.1% of the state's population. They were classified as most backward classes till now, but that put them in competition with more affluent communities. For example, in 2005, the percentage of STs below the poverty line in rural Tamil Nadu was 32.1%. That's below the national scheduled tribe average of 47.3%. But that of rural OBC and others was 19%. The Lokur community in 1965 and the Joint Committee of Parliament in 1967 had recommended the inclusion of this community, pointing out their deprived and vulnerable situation. In 2013, the Union Minister of Tribal Affairs, on the recommendation of the Tamil Nadu government and with approval of the Registrar General of India, had agreed to the proposal for inclusion of these communities. Yet, it has taken nearly a decade for the government to bring an amendment to include them and extend to them the benefits and safeguards which they require and are entitled to. The 2011 census said 8.6% of the country's population was composed of tribal people, amounting to 10.4 crore people. I urge the government to conduct the 2021 census at the earliest so we can update our data and provide benefits to our most vulnerable citizens. There is a need to release the previous data of the socio-economic caste census and conduct the 2021 SECC as well. Let me share some more data about the situation of scheduled tribe people in today's India. As 2022 study by Research Institute for Compassionate Economics says that life expectancy of Adivasi men was 5 years lower and Adivasi women was 4 years lower than the so-called upper caste Hindus. The NCRB of 2021 report says atrocities against STs have increased by 6.4% and 12,159 cases of atrocities against STs were pending at the end of the year. There was also an increase in violence against Adivasi women at 26.8%, with rape cases against STs accounting for 15% of the total rape cases. 95.4% of cases of atrocities against STs were pending trial at the end of the year. And what is the government doing? To pave way for an ecologically devastating Niti Aayog proposed project of the Andaman Nicobar Island Integrated Development Corporation, the government has approved the destruction of forest homes of the particularly vulnerable tribal group called Shompen and the scheduled tribe Great Nicobaris. Now, new Eklavya Model Residential School guidelines also require 15 acres and for the school to be set up in sub-districts where more than 20,000 scheduled tribe people reside, comprising at least 50% of the population. The Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment had recommended that the criteria be reviewed, pointing out that many forest and hill districts would have trouble finding 15 contiguous acres of land for setting up for the school, and scattered population of tribal people will have to travel far distances to access education. I urge the government to review these requirements. The educational situation of scheduled tribe communities also raises concerns. As per 2011 census, the literacy rate for scheduled tribes was 59% as compared to 73% for the general population. The gross enrollment ratio of SC and ST students at the undergraduate level standing at 23% and 17.2% respectively is short of the national average of 26.3%. The Central Education Institutions Reservation in Admission Act 2006 mandates 15%, 7.5%, 27% quotas for SC, ST and OBC students. However, the acceptance rates of applications for SC, ST and OBC in IMMs has been below 4% for the past 4 years.
IIM Ahmedabad received 78 PhD applications from STs between 2018 and 19, 21 and 22, but only 2 have been accepted. IIM Bangalore accepted only 3 out of 188 applications by STs and none out of the 52 applications by the STs. Only 2.5% or 137 ST students out of 3,430 eligible applicants were admitted across all IITs in the last year. In contrast to that, there are 23.51 SC and 5.8% ST of the total population in my home state of West Bengal. According to 211 census, reports of the ST's literacy rate in India was male 68.5% and female 49.4%. The West Bengal ST literacy rate was male 74.15% and female 43.51%. We have put in place an SC/ST pension scheme to take care of the vulnerable elderly in these communities. We have also established various lending programs to help grow entrepreneurship in these communities. Bengal is the only state in India where a dedicated Scheduled Caste Advisory Council has been set up. This is our vision for the welfare of the scheduled caste, which is sadly not being mirrored at the union level. Our constitution recognizes group identity and its importance for social empowerment of the marginalized. Via these provisions, the constitution balances between the history of injustice faced by certain groups and personal liberty. People must be given an assertion of their group identity. Treating every person as an individual would not be sufficient to gain equality and equity of personhood, as it will ignore the different lived realities and caste tribe identity which require the protection of law. It is the duty of the state to ensure these protections reach people in the best way possible in both letter and spirit. Thank you, sir. Thank you, Mausam. Honorable Tiruchi Sivaji. Thank you, Deputy. Thank you, Mr. Deputy Chairman, sir. Sir, this is one of the rarest opportunities we get to support a bill moved by this BJP government. You got the opportunity. Sir, I stand to support on behalf of the DMK party to support this Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022. Sir, this bill provides for the inclusion of 2 communities, Narikoravans and Kurvikarans, in the Scheduled Tribes Order. Sir, at the outset, we would like to thank to our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, who has written a letter to the Prime Minister explaining the deprived conditions of these 2 communities and their vulnerability, and requested to include these 2 communities under the Scheduled Tribes list. And we also are thankful to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for having brought this bill, including these 2 communities. Sir, it's a very great step. I have something else to say. Before that, I would have moved an amendment to this bill, which would have been considered by the government also. But I didn't do that. Because if at all it has been accepted by the government, and if it is passed here, it has to go to the Lok Sabha again. Sir, such a historical move after so many long years have been brought in, I didn't want to give an obstruction. So I would like to make it as a request before the minister to keep it in the consideration. It need not be through an amendment because I didn't also move. It could be brought while framing the rules. The main thing is, sir, the nomenclature. It is the Narikuravan and Kurvikaran. It is a disrespectful manner of calling a person. In the least my acquaintance with Hindi in these past 2 decades, difference between tum and aap. That's it. It could be Narikuravar and Kurvikarar. That is the last letter of these 2 nomenclatures. Instead of N, it could be replaced with R. That would treat those communities with respect. I request the minister to take into consideration and do that while framing the rules. This is very, very, very important, sir. Sir, I'm very sorry to say that after 7 decades of independence and becoming a republic,
Now only we are identifying some communities to be brought under the tribes. That I already thanked. Please. That too because of our Chief Minister, who has represented to the Prime Minister. This is not politics, sir. This is about a community. Mr. Narasimha Rao, my esteemed colleague, was telling only just 27,000. It's 27,000 precious human lives. Even for 1 or 2 persons who are suffering, languishing in another country, we are trying so much to evacuate them. These 27,000 are their population census has yet to be arrived at. Because now only they are going to get, sir, may I remind you, sir, when the BSc met last time with regard to these bills, I suggested that all the bills could be taken up in 4 hours. But the leader of the House said that every bill will be given 2 hours and those from those respective states will be given more time. And Parliamentary Affairs Minister also accepted that. So kindly please consider this is a bill with regard to our state. So sir, we are identifying them only now. Tribal people are our ancestors. We would also have been, once our ancestors would have been tribals only. They live with the nature. They live in the nature. They are the protectors of the nature. But sir, because of industrialization and mining operations, so many tribal villages have been totally uprooted. See, now that they are deprived of their livelihood, their way of living, and they are not able to mix with the mainstream, how sad it would have been. It is banned all these years, and especially in the same house. I remember very well, sir, if you want I can lay the document. In the same December 2015, I have raised the same issue. Because everyone knows that in the 1871 Act of British rule, they were under the Criminal Tribes Act. Because the British want to keep them as slaves or to control them. Later, after independence, that act was repealed. And a committee, high-level committee under B.S. Lokur was appointed, and that committee has recommended these 2 communities to be included. Later, it has not happened. But in 2013, the then Minister of Tribal Affairs, he introduced a bill, sir, that couldn't pass because of the dissolution of the Lok Sabha. So 2015, I made a reference here to include these 2 communities. At last, it has come now, thanks to our Chief Minister and our present Prime Minister. Sir, understanding our situation, see, this is a message to our people there. These people are nomadic. They were living by way of hunting. Now hunting has been banned. So they don't have any other way of living. I know, sir, some youth in this community who have been graduated with an engineering degree, but they are not getting employment because of the reservation. But now this bill provides them that they come under the scheduled tribe, they will be eligible. Sir, because all these things, why we are telling, we have miles to go even now. We have to bring out many other communities. This reservation, by way of bringing them under this order, by way of including them as scheduled tribes, sir, so many will be benefited. So, sir, this community who have been a deplored community all these years, and now that, sir, this bill enables, I have to support. I have a lot to say, but you are nodding head makes me to understand. And as I requested, you have 2 more speakers. Sir, yeah, of course, sir. But yes, only Tamil Nadu is more concerned, and we accepted to that. That's why, sir. And I have nothing more to say. Simply, I would like to say, much more has to be done to bring up this community. The reservation policy alone has helped those who have been downtrodden, suppressed, and sidelined, and discriminated. And by way of this reservation, sir, it's a right place to mention, the first amendment to the Constitution was brought in for reservation to the scheduled castes and tribes by way of our struggle in Tamil Nadu, Periyar, Anna, Kalaignar, and Kamarajar. And now that, sir, now these steps have been moving forward, and I thank the government for having considered to the request of our Chief Minister, and 2 communities are going to flourish in the coming days, and much more to be done. Thank you very much, sir. माननीय संत बलबीर सिंह जी। Honorable, yes, please, sir. But since from the morning, when this bill has been
passed the Lok Sabha as the scheduled caste which has been passed in the Lok Sabha. In that aspect, I want to, from morning, request the chair to explain what has happened in Karnataka. Not to abuse any government. It is the sin I have committed to come to this Rajya Sabha. That is the mistake I have made. Please. What has happened in Karnataka, it is a street fight is going on. Street fight on this very same bill. Sir, Karnataka is in fourth bill. Sir, Fourth amendment. I am a Kannadiga. Yes, this is in fourth amendment, not in this bill. When your good self is going to tell me to rise up with your own permission, if you don't allow me, what for I should sit here? Sir, I will allow you this amendment relates to Karnataka. But you can speak. Can I speak? Please speak. Sir, this reservation bill, only one community, even in that, there are so many other communities left, even this Kurba community, only one community they have wanted to, I don't know the mind of the house. Let me be honest, even in Kurba there are so many communities has left. They wanted to bring under the constitution only one community, and in Kurba, Kad Kurba, like that, several Jain Kurba, they have made a mistake. Now, other than that, to permit me, I will read out. Sir, this Besta full Dora, Mogubera, Christian communities, the state of Karnataka, so many times recommended, and they have not considered even that. The poorest of the poor, the fighting is going on. In scheduled caste, I have not discriminated. This matter went on. The left hand is one of the poorest community. So many communities, sir, has been in the street they are fighting today. Please kindly, now all these communities which has been fighting from last 30-40 years. In Andhra, Chandrababu Naidu straight away said, Madigas are going to, sorry to use that word, we will call it as left hand. Use this, it has come into the Supreme Court. Supreme Court said it is the Parliament has to decide. It is not me. Go to the Parliament. In the Parliament also the matter came up, what we call Madigas. They are also said
It is left to the state government and the central government. State government has taken the decision. Here, the matter was pending. I don't want to say all the old stories. I know what is going on in the country. Some of the states, they try to request your good self to allow us to speak. I was hearing everything from the morning, sir. Now today, this one Kurva community, they want to include in the Constitution Amendment Bill so that the Constitution that will be adopted because the matter is here. Sir, I don't want to take much time, but I would like to request your good self, what is the injustice that has happened? That injustice might set right. Otherwise, I will tell you, I may, with the permission of this house, made a mistake, come to this house. I may, let me tell you, not to challenge anybody. The mistake committed by me, both the parties requested, including the Prime Minister, including Sonia Gandhi. No, nobody is contested. The mistake that was committed by me not to aspire to come to any house. Please, sir, I'm so sorry. Unless these things are set right, even in Kurba community, Jain Kurba, Har Kurba, there are so many issues. This bill must go back to state what the mistake they have committed, and now in Kannada it says, Bidi Jagda, street fight going on. Sitting here, going through all these things, it should be sent back to state government. So many communities is fighting. Matadeshwaras, all invited, and they are sitting dharna in Belgaum, Suvarnasura. Please, I request the government, what the mistake they have committed, we should go back to Karnataka, set right, and coolly they should turn the matter should be sorted out, and then to come back to the Rajya Sabha or Lok Sabha to wriggle out the problems. That is the only request. I don't want to comment on the government, state government, central government. This is the humble request. Lastly, what the Prime Minister on the COVID issue, from day one, what he says, I gone through the advice of the government on COVID issue, never commented one issue so far as COVID issue. The Honorable Minister's statement I am watching, he has taken advance action because so many countries are suffering. Now, he himself has taken the decision
our Honorable Health Minister, what he has said, I totally accept. And India always expecting some never, even the disease, all these things. We anticipating all these things. Prime Minister going on taking it when I stood with him. I never commented what he has taken the decision throughout. I appreciate the Honorable Health Minister. Advanced action notice, said, money aspect, everything is said. I fully support the issue on COVID, what government has taken, are going to be taken. I will stand by. Thank you, sir. माननीय संत बलबीर सिंह जी। चेयरमैन साहब थोड़ा धन्यवाद। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘੀਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਨਾਲਾ ਘੱਗਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਟੂਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। No sir, no, you are not speaking for the first time. ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ please ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਡ ਸਪੀਚ just take a minute, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ एक minute और conclude करें please। नहीं मेडन स्पीच बाद में please no it's not maiden speech। नहीं होनी मिलनी रिकॉर्ड से मेरे स्पीच नहीं है। प्लीज ਸਾਨੂੰ 1 मिनट आप कंक्लूड करिए, मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा फिर। 1 मिनट। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਕੀਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। धन्यवाद बहुत सारे धन्यवाद माननीय संत बलबीर सिंह जी। श्रीमती ममता मोहंता। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 के ऊपर बोलने का मौका दिया। इस बिल में तमिलनाडु के नारीकरण और कुर्बीकरण संप्रदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने के बारे में है। सर, मैं ओडिशा के आदिवासी जिला मयूरभंज से आई हूँ। हमें बहुत गर्व है कि वर्तमान में हमारे देश के प्रथम महिला तथा महामहिम राष्ट्रपति जी इसी ट्राइबल समाज से आए हैं। मैं अपने पार्टी बिजू जनता दल की तरफ से इस बिल का समर्थन करती हूँ। सर, तमिलनाडु के साथ मैं अपने राज्य ओडिशा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ओडिशा से 62 प्रजाति शेड्यूल्ड ट्राइब है और बहुत सारे संप्रदाय है जिनको एसटी लिस्ट में शामिल करने बहुत जरूरी है। ये लोग अपने मौलिक अधिकार सुविधा पाने से वंचित है। सर, ओडिशा सरकार अपने सभी सरकारी योजना में आदिवासियों को अग्राधिकार देते हैं। आदिवासियों को का सामाजिक और अर्थनैतिक विकास के लिए नए नए योजना भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ संप्रदाय जिनके आदिवासी मान्यता नहीं मिलने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। इस बीच ओडिशा सरकार 169 संप्रदाय को आदिवासी संप्रदाय में शामिल करने के लिए सिफारिश किए थे। भंजपुरान, भक्ता, दुरुआ, कोलंगा, नागासिया, पाबा, खंडायत भूया, तामुडिया, चंपुआ कमार, कंदिया etc. ये सब संप्रदाय को आदिवासी मान्यता के लिए भारत सरकार के आदिवासी व्यापार विभाग को ओडिशा सरकार के मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक पत्र लिखे थे, जो अभी तक आदिवासी व्यापार विभाग कोई भी जवाब नहीं मिला है। सर, सरकार का जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग को समान भागीदारी न्याय मिलना चाहिए। ओडिशा के समेत वेस्ट बंगाल, झारखंड और लाखों संख्या कुर्मी संप्रदाय लोग रहते हैं और कोई दशक से अपनी हक के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। कुर्मी लोग भी आदिवासी के तरह भारत की मूल निवासी है। आकृति नहीं प्रकृति के पूजा करते हैं, आदिवासी के तरह जीवन यापन करते हैं।
1931 में कुर्मी संप्रदाय प्रिमिटिव शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में थे, लेकिन 1950 की ऑर्डर में कुर्मी संप्रदाय एसटी लिस्ट से हटा दिया गया। ये कुर्मी संप्रदाय के लोग अपने अधिकार और मौलिक हक के पाने से वंचित है। सर, ऐसे भी ओडिशा में पुरान संप्रदाय जो इनके भी एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए काफ़ी सालों से डिमांड किया जा रहा है। झारखंड राज्य में पुरान संप्रदाय को एसटी लिस्ट में शामिल किया गया है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ओडिशा का पुरान एसटी लिस्ट में नहीं है। सर, ये तो नाइंसाफी हुई है। झारखंड के पुरान होते हैं और ओडिशा के पुरान नहीं, जबकि शादी ब्याह सब काम एक साथ करते हैं। सर, इन कुर्मी और पुरान और बाकी सब संप्रदाय को एसटी लिस्ट का दर्जा दिया जाए। इन लोग को सामाजिक न्याय के साथ में अपनी अधिकार सुविधा का उचित उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you. Dr. V. Sivasan. Dr. V. Sivasan, not present. Dr. M. Thambidurai. Thank you, Honorable Deputy Chairman. I rise to speak on behalf of ADMK on the present bill, which will pave the way for amendments in the list of scheduled tribes and include the Narikuravan and Narikuravan communities of Tamil Nadu. I proudly say that this is yet another example of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, commitment to the social justice only through which economic justice and poverty alleviation can be established in our country. Sir, I will be failing in my duty if I don't pay tributes to the Dravidian movement and its leaders like Tande Periyar, former Chief Minister Peru Anna, former Chief Minister Prochitalevar MGR, former Chief Minister Prochitalevar Amma, former Chief Minister Edapadi Palaniswamy, of who, along with many other reformists, dedicated their life to establishing social justice, making the SC, ST and OBCs of this country benefit through reservation in educational and job opportunities in the government sector. Sir, fishing is also here hunting in the sea. Therefore, there is a demand in Tamil Nadu. The fisherman has to be included in the tribal community, sir. And Valmiki community, Baduga community, Wadar community, Kuruba communities, all these communities must be included in the tribe, sir. As we in the history of free India, the concept of reservation for the socially and economically backward, deprived people in the education and jobs is the greatest contribution of the Dravidian movement, sir. It looks like the word Dravidian is not understood properly and a few and incompatible about its usage. Sir, so the nomenclature of Dravidian was not given by some foreigners, and it is not just we in Tamil Nadu say Dravidian every time an Indian sings the national anthem. He accepts the vision of its author Sri Rabindranath Tagore, who wrote Dravida Utkala Banga. Sir, you know very well, whether it would be a reservation in educationist and job opportunities, our nutritious cooked meal to the school children scheme, which our Honorable Supreme Court applauded and asked all the states and should emulate, and the United Nations Organization has acknowledged as a milestone in removing poverty and hunger. Leaders of the Dravidian movement were the ones who contributed this and several other thoughts of establishing social justice, and through which economic justice can be achieved and have been established to a large scale of our country. The Narikurava and Narikuravan communities, not only 30,000, sir, there are a lot of people are there, sir. Sir, I know very well about our former Chief Minister, President MGR, is very affectionate to the Narikura and Narikuravan communities. When he became the Chief Minister, at that time, immediately, in fact, when he served as a Chief Minister of Tamil Nadu in 1977, on the very first day in office at Fort St. George Fort, MGR let them come and see him at the Secretariat, and he got blessings from them, Narikuravas and Narikuravan. He portrayed himself as Narikuravan, so many films, sir, you know very well. Sir, and also, sir, I want to contribute once again. Our Honorable Prime Minister, he has taken a lot of efforts to
see that our backward class people get all the benefits. Many reservation policies has brought. And also, sir, I want to make it very clear, especially our Dravidian Tamil Nadu culture. So, our Honorable Prime Minister, wherever he goes, he speaks about our Tamil culture, and also because that Dravidian movement brought so many reforms in the society in Tamil Nadu. That is our culture and I will protect it. Therefore, I once again thank Honorable Prime Minister Modi ji to brought this bill and include this community, the tribal community. I request once again, sir, fishermen of Tamil Nadu and other community, we are requesting to include, because it's hunting, fishing also hunting in the sea. Therefore, there is a demand, sir. I request all to consider to include the fisherman community in the tribal things. Thank you. Sri Ramji. मान्यवर कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी। द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हूं। मान्यवर, तमिलनाडु की दो जातियां नरिकुरवन और करवीकुरन दोनों जातियों को आज अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है, जो मुख्यतः कुरंजी पहाड़ियों पर रहती हैं। मान्यवर, इन अनुसूचित जातियों के लिस्ट में आने के बाद इनको मेजर फायदे मिलते हैं। उन मेजर फायदों में मान्यवर स्कॉलरशिप होती है, ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है, नेशनल फेलोशिप होती है, हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स के लिए होता है, रिजर्वेशन इन एडमिशन और नौकरी में होता है। तो मान्यवर ट्राइबल मिनिस्टर जी बैठे हुए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75,000 नौकरियां आदिवासियों की केंद्र सरकार में भी बाकी हैं, 1.5 लाख नौकरियां अनुसूचित जाति की बाकी हैं, 2,00,000-2.5 लाख के आसपास ओबीसी की नौकरियां केंद्र सरकार में अभी बाकी हैं, वैकेंसी खाली पड़ी, इनको भी भराने का काम करें मान्यवर। और साथ ही मान्यवर, मैं मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2003 में एक स्कीम लेकर आए SC ST के छात्रों के लिए, जो गरीब छात्र थे SC ST के, उनको 0 फीस पर एडमिशन की व्यवस्था की गई और उस वक्त आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके उत्थान के लिए काम किया। उसमें अभी तक लाखों छात्र उससे लाभान्वित हो रहे थे, पढ़ने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी बने, लेकिन उस योजना को मौजूदा सरकार ने वहां पे बंद कर दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी एक दिशा निर्देश जारी कराएं कि SC ST की 0 फीस पे एडमिशन हो रहे थे, उस एडमिशन की व्यवस्था को पुनः बहाल कराया जाए। और मान्यवर, आंध्र प्रदेश 2014 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उस वक्त सरकार ने कहा कि हम 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी उन्होंने विजयनगरम में आंध्र प्रदेश में स्थापित कर दिया, लेकिन तेलंगाना के अंदर स्थापित नहीं हो पाई। तेलंगाना के अंदर आज भी आदिवासी समाज बहुत ही दयनीय हालत में रहता है, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास रोजगार है। करीब करीब 40 लाख लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाए। उसके लिए वहां मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में 335 एकड़ जमीन भी दे दी गई, लेकिन सारा काम फाइलों पे चल रहा है, उससे ट्राइबल समाज को फायदा नहीं होने वाला। हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे, क्योंकि ट्राइबल विभाग से मिनिस्टर भी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट में खोलने का जल्द से जल्द प्रावधान किया जाए और जल्द से जल्द उसे खोला भी जाए। और माननीय, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कंप्लेंट भी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है। माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जीवन भर संघर्ष कर रहे थे, तो कांग्रेस ने जगह जगह उनके रास्ते पर रोड करे, जगह जगह उनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया। और मान्यवर, आज जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, तो बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति में पूरा अपना आस्था और विश्वास दिखाया। तो मान्यवर, बाबा साहब की मूर्ति संसद के प्रांगण में भी लगी हुई है, बाहर लगी हुई मान्यवर। और बाबा साहब की मूर्ति के आसपास वहां पे सारा कूड़ा करकट ठेले ठेले इकट्ठे किए जाते हैं, जो ये बर्दाश्त करने के बाहर। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द इस चीजों को देखा जाए और उसकी हटाने की व्यवस्था की जाए। Thankful to the central government and our honorable minister, sir, for understanding the reality, sir. There's been a long wait for Narikuravar and Kurivikaran community to come to the mainstream, sir. Today we are all happy, sir, from Tamil Nadu that the government of India had recognized them, the right and honor of the Narikuravar community to ensure their socio-economic development, sir. Sir, this community have remained backward for a very long time, sir, and they did not get access to
education, healthcare and other social sector benefits, sir. It has been a long pending across political forum in Tamil Nadu, sir, which has come to reality today, sir. We all understand that the Government of India is also keen on inclusive development of all sections of ST and SC, sir, besides implementing new slew of welfare schemes to these kind of communities, sir. Sir, this particular bill, Narikuravar community as scheduled tribe in Constitution will enable the Narikuravar community to avail the benefits of reservation and other welfare schemes which were not previously given to them, and now they will get it from the government, sir. Sir, to conclude, I would like to tell from the Tamil Nadu side, sir, there are other communities like fishermen, Valmikis, Badugas, Kurumas in the list of scheduled tribes, sir, which they want. I hope the government will consider these demands positively and bring the necessary bill before Parliament within a time frame, sir. Last point, sir, while concluding, I would like to make an appeal to the Honorable Minister. When more communities get added to the ST list, the number of people who get covered by the welfare benefit also goes up, sir. Therefore, there should be a corresponding increase in funding of the welfare schemes to these communities so that there is no reduction in the benefit that accrue to the scheduled tribe people, sir. With these words, on behalf of my party, Tamil Manila Congress Mupanar, I extend the wholehearted support to the Constitution Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill, sir. Thank you. Thank you. Sri K. Ravindra Kumar. Not present. Srimati Vandana Chauhan. Not present. Not present. Srimati Mahua Maji. Not present. Not present. Sri Santosh Kumar P. Man. श्रीमती महुआ माजी. धन्यवाद माननीय. धन्यवाद माननीय डेप्यूटी चेयरमैन महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है. आज मैं एक द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अमेंडमेंट बिल 2022 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ. तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका के कुछ समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में शामिल किए जाने की मैं स्वागत और सराहना करती हूँ. इससे वे समुदाय संविधान प्रदत्त अधिकारों तथा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. लेकिन दूसरी ओर झारखंड के आदिवासियों की उनके अपने अस्तित्व की, आइडेंटिटी की रक्षा के लिए लंबे समय से चली आ रही सरना धर्म कोड की मांग का केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है. झारखंड राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई है. इनकी जनसंख्या 1931 में 38.3% थी. 2011 में जनसंख्या घटकर 26.2% हो गई थी. काम के लिए दूसरे राज्यों में जाने वालों की गणना आदिवासियों में नहीं होती और संविधान में आदिवासियों को दिए गए अधिकारों एवं सुविधाओं से वे वंचित हो जाते हैं. कई आदिवासी संगठन इसे लेकर आवाज उठाते रहे हैं. इन्हीं वजहों से 2021 में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को कैबिनेट से पास करके केंद्र सरकार को भेजा है ताकि अलग धर्म कोड मिल जाने पर इनकी पूरी जनसंख्या की गिनती की जा सके और संविधान प्रदत्त अधिकार मिलने में आसानी हो. मगर केंद्र सरकार ने अभी तक इस सरना धर्म कोड बिल को पास नहीं की है. पारंपरिक रूप से आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते. वे प्रकृति की पूजा करते हैं. वे वृक्ष, पहाड़ और अलौकिक शक्तियों की पूजा करते हैं. जनगणना के वक्त धर्म के कॉलम में आदिवासियों को अन्य कैटेगरी में खुद को रखना पड़ता है, जो कि उन्हें पसंद नहीं. उनका मानना है कि उनका धर्म आदि धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म. फिर क्यों नहीं उनके धर्म को मान्यता दी जा रही है केंद्र सरकार द्वारा? 2011 की जनगणना में करीब 79 लाख से ज्यादा लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य भरा, जबकि 49 लाख से ज्यादा ने अन्य नहीं सरना भरा. और इन 49 लाख में से 42 लाख लोग झारखंड के रहने वाले थे. बंगाल और ओडिशा के करीब 4.25 लाख लोगों ने भी सरना भरा. झारखंड में 32 जनजातियां रहती हैं,
जिनमें 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। अतः यह समझा जा सकता है कि झारखंड की कितनी बड़ी जनजातीय आबादी सरना धर्म कोड चाहती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कुछ वर्ष पहले यह सलाह दी थी कि आगामी जनगणना में धर्म वाले कॉलम में आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखे। इसके लिए संघ देश भर में अभियान चलाएगा। उससे पहले 2015 में भी विषय पर प्लीज। उनका यह कहना था कि सरना धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है, और इसीलिए 2011 की जनगणना में से पहले सरना कोड की मांग में आंदोलन हुआ था। थैंक यू महुआ जी। बस थोड़ा सा है इसमें। थैंक यू प्लीज। हमारा ये सवाल है कि क्या रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल फायदे के लिए हिंदू बनाने की साजिश रच रही है? इस बिल को क्यों स्थगित कर रही है, क्यों नहीं ला रही है? आदिवासियों, क्योंकि आदिवासियों को हिंदू बनाने की साजिश लगातार चल रही है और वो सरना धर्म की मांग कर रहे हैं। नॉट प्रेजेंट। श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला। केवल जो अब्दुल्ला जी बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा। प्लीज यू कंटिन्यू। How many minutes, sir? Not displayed. Please. I need 5 minutes, sir. I have 2 minutes. Honorable sir, thanks for the opportunity given to me to speak on this August House on the bill, namely the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022, which include the Narikoravar and Kurivikarar community in the list of STs in the state of Tamil Nadu. I really welcome this bill deal with the social engineering, since it will try to include some of the people of this country who are marginalized even now due to the hierarchical social system based on underlying notion of purity and pollution, which further denies mass participation in the development of the nation. Sir, my floor leader, Tirchi Siva Anna, as he told, even after 72 years since we formed our constitutions, we are still identifying the marginalized communities to be added under scheduled caste, scheduled tribes from each states. Sir, our veteran leader, Dr. Kalanger, raised the request to the union government in 2013 for bringing the Narikoravar community in SC list. DMK, in its election manifesto in 2021, had assured that the union government will be urged to accord ST status for Narikoravar community. As assured, our beloved leader, Honorable Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin, after assuming charges as the Chief Minister, had written a letter to the Honorable Prime Minister to place Narikoravar in ST category. Our Honorable Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin had personally visited the habitations of the community few months back to create the public awareness about the difficulties faced by the such oppressed communities across the nation, and to expose the sad truth that all social upliftment opportunities are denied for them by the so-called upper caste, who is enjoying the maximum privilege in the country and deny all the benefit to that community. This was pointed out by Mozam Noor also. Thereby he reassured the community that the issue will be taken up with the union government. Due to the continuous efforts of our leader, Thalapathy M.K. Stalin, the announcement came when DMK is celebrating his Mupparum Villa. Sir, this announcement will provide social justice for youth of the Narikoravar community in education and employment. Sir, I would like to remember this August House that in 2016, our beloved leader, ex-Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalanger, requested our Honorable Prime Minister to include fisherman community also in scheduled tribe list. Sir, before I conclude, I would like to mention again, yeoman service rendered in this conduct by our leader, Dr. Kalanger and Thalapathy M.K. Stalin for these rights of the oppressed. Fishermen are also one of the most depressed and vulnerable community in India, and therefore deserve all the constitutional protection. So, while we support this bill, I call upon the union government to expedite the inclusion of fishermen community in the scheduled tribe also, sir. With this, I conclude. Thank you, sir. Next speaker, Dr. K. Lakshman. Thank you, sir. They are also allow me to speak on this constitutional scheduled tribe amendment bill. Particularly, for the last few days, we have been witnessing how Modi ji government
is concerned towards this oppressed, depressed, neglected communities have been given due importance by introducing bills pertaining to Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Chhattisgarh. Though they are in very small numbers, as rightly pointed out, from Tamil Nadu, Narikoravan and Kurvikaran, hardly 27,000 population. In spite of that, Modi ji has taken a decision to include in ST. This shows how much concern Modi ji government has got towards these oppressed sections. We all know, sir, 75 साल के आज़ादी के अंदर लगभग 50 साल के ऊपर कांग्रेस ने हुकूमत की और ज़्यादा एक ही परिवार का सत्ता में थे। सभी से पहले कांग्रेस या पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जनजाति सभी लोगों का किस तरह वंचित किया गया, ये तो इतिहास है। मगर मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में जो बैठने वाले लोगों के हित के लिए सोचा जा रहा है, irrespective of caste, creed, region, religion, language, much importance and due importance is being given to this section. इस बीच में मुसलमान समाज के अंदर जो भी पिछड़ा है, दलित है, उन लोगों के हित के लिए भी, जो पसमानदा कहलाते हैं, उनके हित के लिए भी आज मोदी जी सोचा ही नहीं। इस बीच में सरकार के माध्यम से हमारे बीच में हमारे भैया गुलाम अली जम्मू कश्मीर से जो गुज्जर मुसलमान के नाम पे कह जाते हैं, उनको भी आज राज्यसभा में पहुंचाना ये मोदी जी का सोच है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ नरेंद्र मोदी जी। जो कश्मीर वाली के अंदर जो मुसलमान ये हमारे पसमानदा है, उनके हित के लिए भी सोचना। मोदी जी ने जब से सत्ता संभाले, मैं ओबीसी मोर्चा सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते के नाते इतने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक पन्ने में रचने का चीज है। पहली बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। ये संवैधानिक दर्जा देने समय भी किस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी और वामपंथी ने पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में किस तरह विरोध किया, पूरा जनता जानती है। उसके अलावा ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर जो 6 लाख था वार्षिक आयु, उसको 8 लाख बढ़ाया। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कर्मचारी को, बच्चों के लिए पहली बार उनको भी आरक्षण का प्रावधान मोदी जी सरकार दिया जा रहा है। सिर्फ हमारे गरीब बच्चे ये रोजगार मांगने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला संस्था बनना है। उसके माध्यम से वेंचर कैपिटल फंड सिर्फ और एससी एसटी के लिए जो था 2018 से 50 लाख से लेकर 15 करोड़ तक आज राशि किस तरह वितरण किया जा रहा हमारे नौजवानों को, ये वेंचर कैपिटल फंड का। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, मछुआरों के लिए लगभग 20 करोड़ का बजट आज बनाया गया। आज मोदी जी के सरकार में 27 पिछड़ा वर्ग समाज के मंत्रिमंडल शामिल होना और हमारे 12 अनुसूचित जाति के और हमारे 8 अनुसूचित जनजाति के लिए और हमारे 11 महिलाओं को और हमारे 5 माइनॉरिटी के लिए देना, ये जो हमारा मोदी जी का सामाजिक न्याय सूत्र है। और इतना ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी 55 मंत्री में आज 22 लोग पिछड़ा वर्ग समाज के मंत्री रहना, ये बीजेपी का सोच है, ये हमारा सामाजिक न्याय के बल। इतना ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लगभग देश के अंदर 45 आज केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहली बार मोदी जी सरकार आज बैकलॉग पोस्ट हजारों संख्या में थे। आज इसके पहले तो लगभग 9 या 10 या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी समाज के थे। आज हमारी मोदी जी के सरकार आने के बाद 1 साल के अंदर लगभग 3 से लेकर 4,000 तक ये बैकलॉग पोस्ट भर्ती करने से आज किस तरह ओबीसी समाज के लिए, उन्नति के लिए ये मोदी सरकार सोच रहे। स्टैंड अप इंडिया के नाम पे हर बैंक एससी एसटी वुमेन के लिए ये लोन देना और इसीलिए आज वो किस तरह आगे बढ़ रहे। हमारे कांग्रेस जब समय पे पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण का मुद्दा आया, आजादी से बाद
खाका कलेक्टर कमीशन लेकर मंडल कमीशन तक ये पार्लियामेंट में विरोध किया और खाका कलेक्टर किस तरह वो तंडे बस्ती में वो डाला गया, ये पूरा देश जानती है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी तो हमेशा वो बीसी विरोधी है और एससी विरोधी भी है। इस तरह अब स्थानीय इकाई इस बीच में, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, जहां हमारे ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण था, किस तरह इन सरकारों ने ये आरक्षण को खो गया था। मगर महाराष्ट्र के अंदर हमारे फडणवीस जी ने, हमारे शिंदे जी का सरकार बाद में आया, उच्च न्यायालय को जाकर आंकड़े बताकर, एम्पिरिकल डेटा बताकर किस तरह आज आरक्षण आज स्थानीय इकाइयों में भी लागू किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में उसी तरह लागू किया जा रहा है। मगर आंध्र प्रदेश और हमारे तेलंगाना में 34% जो हमारा आरक्षण था, आज हम खो गए। लगभग 14% हमारे ओबीसी समाज के आज ये स्थानीय इकाई में आरक्षण खो गए। ये उनका रवैया है। ये किस तरह हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सरकार से, इतना ही नहीं, हमारे गोमंतु जो समाज है, समाज के अंदर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, जो हमारे डिनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम पे जो कहला जाते हैं, उनके लिए भी हिदायत कमेटी महाराष्ट्र में गठित किया। जब हमारे फडणवीस सरकार ने, आज मोदी जी सरकार ने हिदायत कमीशन घटाकर लगभग वेलफेयर बोर्ड बनाकर किस तरह आज पूरे आज राशि दिया जा रहा, सीड के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किस तरह आज दिया जा रहा है, हम आज जानकारी होना चाहिए। इसलिए आज मोदी जी ने शेड्यूल ट्राइब के नाम पे किस तरह आज जनजाति गौरव दिवस हमारे आज ये सरकार किया जा रहा है, उसी तरह आज तेलंगाना के बारे में हमारे कई भाई ने बताया शेड्यूल ट्राइब के बारे में। इतना आज तेलंगाना के अंदर एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी को धोखा दिया जा रहा है। हमारे तेलंगाना के सरकार आज लगभग 8 साल में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के माध्यम से 2 साल के अंदर एक जीओ के माध्यम से जो हमारा शेड्यूल ट्राइब आबादी तेलंगाना के अंदर है, उसके आबादी के अनुसार एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल देने का प्रावधान रहने के बावजूद भी आज 2 साल के अंदर किया नहीं गया। ये हमारा अभी टीआरएस के नाम पर अभ्यास जो बन गया, ये केसीआर का सरकार था। बाद में इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताया 2014 में ये 12% उनको हम रिजर्वेशन देंगे, तो आबादी तो 10% है, मगर 12% का ऐलान किया मैनिफेस्टो। किस तरह एसटी लोगों को तेलंगाना में धोखा दिया गया आज टीआरएस सरकार ने। बाद में फिर वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एससी एसटी रिजर्वेशन कैन बी गिवन, मगर वो भी नहीं दिया गया। जब हाईकोर्ट में एक बिल जब 150 ऑफ 2015 जो गया, एज पर पॉपुलेशन 9.34 आरक्षण देने का जब हाईकोर्ट डायरेक्शन दिया, तभी भी सरकार आगे नहीं आया। ये कोर्ट का डायरेक्शन को भी किस तरह टुकरा दिया। बाद में ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल TAC इट हैज गॉट इक्वल पावर्स ऑन पार विद स्टेट गवर्नमेंट, मगर सीएम बीइंग हिमसेल्फ ए चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी, they have passed a resolution to provide 9.34 reservations to the STs in the state, but वो उसको भी टुकरा दिया, वो भी किया नहीं। मगर बाद में 2017 में तेलंगाना असेंबली में एक बिल पारित किया, वहाँ की कम्युनल रिजर्वेशंस मुसलमान के लिए 12%, ST 10% के नाम पर ये केंद्र को भिजाया गया, मगर विच इज वाज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मगर सरकारी राज्य सरकारी देने का वहां प्रावधान रहने के बावजूद भी किस तरह वो गुमराह करी। आज एक जीवो पारित किया गया फिर वो करने के लिए। इसलिए मैं आपसे मांगना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज एसटी को जिस तरह आज मोदी जी के नेतृत्व में न्याय मिल रहा है, उसी तरह हमारे वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि तेलंगाना के अंदर जो आज बोया का नाम पे और आंध्र प्रदेश के नाम में भी बोया का नाम पे कहा जाता है, कर्नाटका और अन्य राज्यों में भी उसको एसटी दर्जा दिया गया। आज आंध्र प्रदेश सरकार तो प्रस्ताव पारित किया गया, मगर तेलंगाना सरकार वाल्मीकि बोया के बारे में प्रस्ताव भी पारित नहीं किया। इसलिए मैं हमारे भाइयों से भी मैं मांग करता हूं कि तुरंत हमारा तेलंगाना असेंबली भी वाल्मीकि बोया के बारे में सोचो। बाद में किस तरह आज मोदी जी सरकार इन राज्यों में छोटे छोटे जातियों को एसटी में आज दर्जा दिया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं। और कुरवा समाज जो है महबूबनगर, गढ़वाल ऐसे प्रांतों में, उसको भी एससी का जो दर्जा रहने के बावजूद भी ठीक ढंग से तेलंगाना में उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि पूरा एससी एसटी वो दबा जा रहा है, ओबीसी तेलंगाना के अंदर अब पूरा अब जनता और देश जानने लगी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं
कि आज किस तरह आज हमारे मोदी जी सरकार ने एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उसी तरह और आने वाले दिनों में भी आज तेलंगाना में भी जरूर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी तो वाल्मीकि को जरूर हम एसटी का दर्जा देंगे और कुर्मा को भी उसका जो भी एससी का आज सर्टिफिकेट नहीं मिला जा रहा उसको भी एससी सर्टिफिकेट देने के लिए जरूर हम प्रयास करेंगे। इसी तरह हम दोबारा एक हमारे मोदी सरकार को धन्यवाद अर्पित करते कि इतना बड़ा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, किस तरह ओबीसी समाज के लिए जो निर्णय लिया गया, काका कलेक्टर कमीशन लेकर मंडल कमीशन तक किस तरह कांग्रेस हमेशा विरोध किया। दे हैव बिट्रेड ओबीसी, दे हैव नो मॉरल राइट टू सीक। हमेशा ओबीसी को, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को वोटर के नाते देखे मगर इंसानियत के नाते कभी देखे नहीं। इसलिए मगर मोदी जी ने छोटे छोटे जातियां, कम पॉपुलेशन रहने के बावजूद भी आज एसटी दर्जा देना ये महत्वपूर्ण निर्णय है। ये इतिहास के पन्ने में लिखने का निर्णय जो मोदी जी ले गया, आज तो हम तो कहला सकते हैं ये तो अभिनव महात्मा ज्योतिराव फुले है, अभिनव अम्बेडकर जी है। मैं इन शब्दों से मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी। श्री KRN राजेश कुमार। அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழகத்தின் முதலமைச்சரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவருமான தளபதி அவர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று இன்றைய தினம் ஒன்றிய அரசு நரிக்குறவர் இனத்தையும் குருவிக்காரர் இனத்தையும் பழங்குடியினர் பட்டியல் பழங்குடியினர் சேர்த்திருப்பதற்கு ஒன்றிய அரசிற்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவை மனதார நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த மசோதா மக்களவையிலே நிறைவேற்றப்பட்டவுடன் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் ஒன்றிய அரசுக்கு தன்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டார் என்பதை இந்த அவையிலே நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த விவாதத்திலே பங்கு பெற்று பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் நண்பர்கள் நரசிம்மன் ராவ் அவர்களும் மரியாதைக்குரிய லட்சுமணன் அவர்களும் 27,000 மக்கள் தொகை கொண்ட இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டினார்கள். நான் இந்த அவையிலே ஒன்றை பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு மக்கள் தொகை அடிப்படை இல்லை. எந்த சமுதாயத்திற்கு வாய்ப்புகளும் உரிமைகளும் மறுக்கப்படுகிறதோ அந்த சமுதாயத்திற்கு சமூக நீதியை நிலைநாட்டி தீர வேண்டியது அரசியல் சாசன சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற உரிமை என்பதை இந்த அவையிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்கும் சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதில் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒரு முன்னோடி இயக்கமாக இருக்கிறது என்பது இந்த மாண்புமிகு இந்த சபையும் சபை உறுப்பினர்களும் அறிவார்கள் என நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு பழங்குடியினர் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிக்கு அடிப்படை கட்டமைப்புகளை செய்து தருகின்ற அரசியல் சாசன சட்டத்தின் பிரிவு 275(1) சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி அவர்களுக்கு செய்து தர வேண்டும் என்று அந்த சட்ட பிரிவிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே சட்ட பிரிவில் நான் மாண்புமிகு பேரவை துணைத் தலைவர் வாயிலாக இந்த அரசை கேட்டுக்கொள்வது, பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சரை கேட்டுக்கொள்வது, இணையதள சேவையும் இந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சார், இது மை ஓன் டிசிஷன். இந்த பிரிவிலே இணையதள சேவையை நாம் சேர்க்க வேண்டும். ஏனென்று கேட்டால் இந்த இடஒதுக்கீட்டால் பயன்பெறுவது எதில் என்று கேட்டால் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு. கல்வியும் வேலை வாய்ப்பும் பெற வேண்டும் என்றால் இன்றைய தினம் இணையதள சேவை வேண்டும். அந்த இணையதள சேவை மலைவாழ் மக்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள், இணையதள சேவை வழங்குகின்ற தனியார் நிறுவனங்கள் மலைப்பகுதிக்கு தங்களுடைய சேவையை கொண்டு வருவதில்லை. ஆகையால் அரசு இதற்கு பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அரசியல் சாசன சட்ட பிரிவு 275 கீழ் அவர்களுக்கு அந்த இணையதள சேவையை வழங்க முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, ஏற்கனவே தமிழகத்தில் இருந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கோரிக்கை குடும்ப கவுண்டரும் அதை சார்ந்திருக்கின்ற உட்பிரிவும் இன்னும் பல பழங்குடியினர் பிரிவுகளை இந்த பட்டியலிலே சேர்ப்பதற்கு ஒன்றிய அரசு ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you. Honorable Shri Kanak Medla Ravindra Kumar. Thank you, sir, for giving this opportunity. Sir, this bill relating to the Tamil Nadu and other, sir, mere including the certain communities in the ST list giving the status is not sufficient. It is the duty of the government to create infrastructure like drinking water, housing, hygienic conditions, health care, education, employment, roads and transport.
Sir, the people belonging to the scheduled tribes are subject to discrimination and humiliation. In order to avoid this, to prevent the crime against the scheduled castes and scheduled tribes, Prevention of Atrocities Act Section 21(2) states the identification of the caste of the area where the members of the scheduled caste and scheduled tribes are likely to be subjected to atrocities and adoption of such measures as to ensure the safety for such. The scheduled caste and scheduled tribes has been framed. Rule 3(1) said rule casts duty state government to do delineate the identified areas which is the members of ST vulnerable to being subjected to atrocities and adoption of such necessary measures to ensure their safety. As of now, sir, in Andhra Pradesh, Srikakulam, Kadapa, East Godavari districts have been identified and declared as atrocity-prone area under these rules. Sir, but given the present situation in the state of Andhra Pradesh, the entire area of the ST population is living is not safe. They have to let loose in party. Sir, provisions of the Panchayati Act enacted in the 1996 to give effect to the inserted in the constitution-wide 73 Amendment Act were made applicable to the scheduled area. The Act specifically states that a state shall not make any law Part 9 of the Constitution which is inconsistent with the certain features including state legislation on the Panchayat that may be made shall be in consonance with the customary law, social, religious practice and traditional management practices, communities and resources. The Grama Sabha or Grama Panchayat at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of the land of the scheduled area. The development of the projects before resettling, rehabilitation of the persons affected such projects in the scheduled area has to be actually planned and implement that. But the state government is not doing the activities contrary to the above said, which is detrimental to the welfare of the scheduled tribes. Sir, previously granting, in Andhra Pradesh, granting permission for projects of private companies in the scheduled areas, leasing out the land in violation of the Land Transfer Act. In the 1970s, the same was set aside by the High Court. Moreover, as per the National Hydro Policy, Power Policy, hydro to private companies also giving without competition. Due to the present government station, this tribal culture is in danger, being destroyed with the stoppage of the hydro projects. The bauxite mines in Visakhapatnam agency were also handed over to the kith and kin of ruling party. And further, in the name of SEZs, assigned lands of tribals have been abolished. If you sell it to, they wanted to sell it to the private companies. The bauxite worth of rupees 50,000 crores was handed over to his cousin and also relatives, Sri Y.V. Subba Reddy Garu and Pratap Reddy Garu and others. Though there are several allegations are also there. He also promised free electricity, 200 units to the tribals. They did not, I'm concluding, sir. They did not give it to anyone except these who were in the tandas. They have stopped opening of their mouths and the promise that of converting tribal tandas and the hamlet of into panchayatis. The state government should immediately withdraw the decision. The tribal culture and their lands should be protected. It cannot be allotted to the bauxite mines or any other hydro projects in tribal tandas. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Manni Sandosh Kumar P. Not present. इनका हो गया, मोहम्मद जी का हो गया, इसके बाद ही माननीय उपसभापति महोदय, मैं आसन का आभारी हूँ। तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो संविधान अनुसूचित जनजातियाँ दूसरा संशोधन माइक प्लीज। हाँ माइक ऑन है माननीय मंत्री प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आसन का आभारी हूं कि तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक, दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर विचार करने के लिए
इस सदन में आपने अनुमति दी और माननीय सदस्यों ने इस सदन में तमिलनाडु से संबंधित अनुसूचित जनजातियों के सूची में प्रविष्ट करने की दृष्टि से जो नारी कुर्बन और नारी विकाकरण समुदाय के संबंध में चर्चा की। इस चर्चा के दौरान जीबीएल नरसिम्हा राव से लेकर काफी माननीय सदस्यों ने, यानी अभी लास्ट वक्ता जो रविंद्र कुमार जी है उनका भी मैं वक्तव्य सुन रहा था, ऐसे 15 माननीय सदस्यों ने इस सदन में तमिलनाडु के नारी कुर्बन और क्रू विकाकरण समुदाय के प्रविष्ट सम्मिलित करने या इंक्लूजन के और साथ ही साथ आदिवासी जनजाति ट्राइबल कम्युनिटी के अन्य समस्याओं पर भी विचार किया, चर्चा किया। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से भी लोगों ने अपने विचार रखे। मैं सबसे पहले आज तमिलनाडु के उन लोगों को जिन्हें काफ़ी वर्षों से न्याय की अपेक्षा थी और जिस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन्हें न्याय मिले, इस सदन में चर्चा के लिए और चर्चा के उपरांत सदन के माध्यम से पारित करते हुए उन्हें अधिकारों से, संवैधानिक प्रावधानों से संरक्षित किया जाए। नारी कुर्बन, नारी कुरुविकरण, ये पर्यायवाची शब्द जो पिछले कई वर्षों से, यानी आज़ादी के बाद लगातार ये उत्पीड़ित रहे, अधिकारों से वंचित रहे और न्याय की गुहार करते रहे। इसकी आबादी बहुत कम है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने किया। और समय समय पर इसके पहले भी, क्योंकि लगातार कई राज्यों के ऐसे विसंगतियों को, ऐसे जनजाति समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सदन में चर्चा हो, इसका प्रयत्न होता रहा। और पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी कई ऐसे विधेयक लाकर न्याय मिले, यह सुनिश्चित किया गया। ये समुदाय की आबादी बहुत कम है। हम सभी इस बात से अवगत है, उपसभापति महोदय, कि ट्राइबल जनजाति समुदाय कैरेक्टर बेस, यानी चारित्रिक गुणों के आधार पर पहचान करते हुए सूचीबद्ध किया जाता रहा है, किया गया है। और उसमें कहा गया कि उनके डिस्टिंक्ट कल्चर, उसके जो जीवन पद्धति है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है। उसके साथ साथ ही ये कहा गया है कि उसमें साइनेस, यानी कहने में भी हिचकिचाना, कहना है फिर भी काफ़ी सोच विचार करके कि आज कहना या कल कहना है। आज स्थिति सामान्य नहीं, अपने मन में ही सोच करके वो अपने को बैकआउट कर लेता है, ठीक है आगे कभी कहेंगे, ऐसे सोच करके अपनी बातों को सहजता के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाता है। उसे साइनस के रूप में कि संकुचाता है, वैसे उसका परिचय है। उसी तरीके से वो आइसोलेशन के साथ, यानी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहना पसंद करता है, पहाड़ों में,
पहाड़ों से घिरा हुआ जंगलों के बीच के गांव में अपना हट बना करके, अपना कबीला के दृष्टि से सोच करके और वही आय उपार्जन का साधन प्राकृतिक दृष्टि से ढूंढते हुए अपने जीवन यापन के साथ शांति और अपनी संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम रखते हुए प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जो जंगलों में वन्य आधारित जो भी उपलब्ध होता है उसके साथ कई ऐसे हैं, जैसे इसके बारे में कहा गया है कि ये जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, पेड़ फल मूल कंद के भरोसे, और कुछ अनाज इस तरह के जो मोटे अनाज, जिस अनाज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन को लिख करके ये बताया कि इस वर्ष को मोटे अनाज के रूप में मिलेट ईयर के रूप में मनाना चाहिए, और यूएन ने उसकी स्वीकृति दी। यह वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वह मिलेट का उत्पादन करने वाला इन जंगलों में रहने वाले लोग हैं। इन जंगलों में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति मोटे अनाज के साथ जुड़ी हुई है। तो यह उनका परिचय है, बैकवर्डनेस उनका परिचय है। और इस दृष्टि से जो साइनेस होने के कारण कई वर्ष लगे उनकी आवाज को समझने के लिए, और अंततः इस सदन में इस विचार के साथ लाया गया नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि उनकी आवाज, उनकी गूंज हमें समझना चाहिए, बजाय कि हम बहुत सारी बातें कहें, बल्कि जिसकी आबादी कम है। आपने देखा होगा इन आंकड़ों में जो खासकर समुदाय की बात कही गई, उनकी आबादी 5000 है, लेकिन 131 करोड़ आबादी के देश में 5000 लोगों की आवाज भी यह सरकार सुन सकती है, यह इस बात का प्रतीक है। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमें बेहद प्रसन्नता है कि काफ़ी माननीय सदस्यों ने इस बात पर समर्थन करते हुए कि इन्हें सूचीबद्ध किया जाए। इसके साथ साथ ही कई माननीय सदस्यों ने और भी अपने अपने राज्यों के बारे में कहा है। भारत सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार संवेदनशील है। सहजता के साथ, सरलता के साथ रहने वाले लोगों को संवेदनशीलता के साथ कैसे देखा जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसलिए इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसके पहले उत्तर प्रदेश का हुआ, अभी इसके बाद कर्नाटका का, हिमाचल का, या और भी कई प्रदेशों का हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो पद्धति है, जो हमारे मोडालिटीज है, जिस प्रावधान के तहत, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपको ये डिस्टिंक्ट कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सारे समुदायों को जो चारित्रिक गुणों के साथ परंपरागत ढंग से वर्षों से एक लोकतांत्रिक विश्वास के साथ इस देश में जी रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सभी पर हमारा राज्य सरकारों के साथ कि वो अच्छे ढंग से एंथ्रोपोलॉजी के साथ, एथनोग्राफिक रिपोर्ट के साथ इन सारे चीज़ों को प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत करते हुए हम उसे आगे, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में कुछ इस तरह की संस्थाएं हमारे लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए कार्य करती है। जैसे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देश में लोकतांत्रिक आधार पर सरकार चुनी जाए, इसके लिए काम करती है। उसी तरीके से सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, वो इस देश में लगातार इस बात के लिए प्रयत्न करता है कि देश के आबादी और खासकर जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी सूची एक अच्छे ढंग से बने। तो इसलिए जो हमारी प्रविधि है, जो व्यवस्था है, कि आरजीआई इन सारे चीज़ों में गहन अध्ययन करने के बाद अपना मंतव्य दे। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसको देखता है, और देखने के बाद में वो अपना कमेंट्स के साथ भेजता है, और तब आगे कंसल्टेशन की कार्रवाई शुरू होती है। और इस ढंग से हम सारे समुदायों के बारे में काम कर रहे हैं। मैंने कल लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की कि हमारे पास जो पेंडिंग है, हमारे पास जो मामले हैं, उस पर अध्ययन का कार्य चल रहा है, और जिसका जो अध्ययन का रिपोर्ट राज्य सरकारों के माध्यम से आएगा,
उन राज्य सरकारों के अध्ययन को आरजीआई को भेजते हुए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजते हुए, उस पर जो सहमति या उनके जो गुणात्मक चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे चीज़ों को सदन में लाकर कैसे न्याय मिले यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका परिचय आप देख रहे हैं कि आज नारी कुर्बन, नारी विकरण का यह समुदाय के मामले में चल रहा है। उपसभापति महोदय, माननीय कुछ सदस्यों ने इसके साथ साथ ही इस बात पर कहा है कि ट्राइबल एट्रोसिटीज का, आपको सदन को इस बात से अवगत है कि सदन में ही ट्राइबल शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और सशक्त कैसे बने, इसी सदन पर चर्चा करते हुए उस पर नए तरीके से संशोधन पारित किया गया, ताकि इस तरह के अत्याचार, इस तरह के अन्याय या इस तरह का एट्रोसिटीज न घटे। इसके साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं कहना चाहता हूं कि लगातार भारत सरकार की चेष्टा है कि राज्यों के माध्यम से जो व्यवस्था को संतुलित और बेहतर एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, कि किस तरीके से जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ गवर्नेंस अच्छा हो, पेशा के माध्यम से अच्छी गवर्नेंस हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। हम पंचायती राज मंत्रालय के साथ संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसी तरीके से इस देश में एफआरए के माध्यम से, फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से कम्युनिटी फॉरेस्ट का अधिक से अधिक अधिकार उन गांव में रहने वाले परंपरागत वन निवासी, जंगल में रहने वाले लोगों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से उनका जीवन का जो आधार है वो और मजबूत हो। इसके साथ साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इस समय जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई, आपको ज्ञात है, सदन को इस बात का अनुभव है कि नए एजुकेशन पॉलिसी में जो कंटेंट्स दिए गए हैं और ट्राइबल्स के लिए जो चैप्टर दिए गए, आप इस सदन को अवगत है कि ट्राइबल के बहुत सारे, क्योंकि 700 से अधिक समूह है और उसके अपने डायलेक्ट है, अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, और एक बड़ी रुकावट ट्राइबल एरिया के एजुकेशन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आप हम सब इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, कई माननीय सदस्य ट्रांसलेटर लेकर के सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसमें भाषा की बैरियर है, भाषा एक बड़ा संकट है। नई शिक्षा नीति में जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यह व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया गया है। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि नारी कुर्बन, नारी कुरु विकरण को इस सदन के माध्यम से आज पारित किया जाए और जो समुदाय इंतजार में है उसे न्याय मिले। धन्यवाद। The question is that the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Sri Elamaram Karim. Sri Elamaram Karim, not present. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Arjun Munda to move that the bill be passed. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Honorable members, before I move to next bill, one just clarification. Honorable members, the Honorable Leader of Opposition had on 13th, 14th and 16th of December 22
had demanded that I must express regret or say that I had no powers in allowing him and others to speak in respect of notices given under Rule 267. And I had promised that I will be back with the facts, so I am keeping facts before you. Honorable members, leveling unfounded allegations against the chair is a serious matter. With reference to the same, I wish to point out, honorable members, rulings made by the honorable chairman on 8th December 2022 and several times thereafter are binding on all of us, and I too am not an exception in following that. Forgive me to repeat, on 13th December 2022, Honorable LOP was allowed to speak despite his notice was not admitted, and on 14th, he had not given any notice and the chair reminded him about this. It was just a factual correction, as in his submission, Honorable LOP had said that he had given a notice. I would also like to underline that there is no direction or indication in the records which suggests that I stopped him from making his submission. In fact, on 13th December, I allowed him to read his notice on the floor of the House. Honorable members, regarding the allegation that I do not give members from other side a chance to speak and I do not look towards them, I would like to clarify that this is factually incorrect. How can the chair prevent honorable members from whichever side from speaking whose notice has been accepted and listed under the rules? Besides, there is a freedom of speech available to members to raise any issue on the floor of House. However, such freedom is subject to the provisions of the Constitution. It is not free for all. Proceedings of the House need to be conducted in a structured manner. If everyone is allowed to speak at the same time as per their wish, there will be utter chaos and no meaningful discussion will take place. It would send a very wrong picture before the nation. We must adhere ourselves to the provisions of the rules of the House. Only then we would be able to do justice to the cause for which we have been sent to this House. Honorable members, rules are collectively framed and approved by all of us at this august House. Chair is duty bound to conduct the House in accordance with those rules. If Chair, in exercise of those rules, does not allow an honorable member to speak on issues not listed or admitted under the rules, it should not be taken as partisanship. Honorable members, the Chair draws its powers from you and this House. Therefore, sitting on the chair, no person can afford to be for or against anyone. Thank you. Now we are taking the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022. Sri Arjun Munda to move a motion for consideration of the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022. उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को विचार किया जाए। आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का और मौका है। नहीं, अभी सब माननीय सदस्यों के बोलने के बाद आप बोलें। जी जी जी। मोशन मूव्ड। नाउ श्री अरुण सिंह जी, माननीय अरुण सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति जी। यह जो बिल आया है उसमें कुड्डू कुर्बा तो पहले ही जो सीरियल नंबर 16 पे था, और बेटा कुर्बा यह जो बेसिकली मैसूर, चामराजनगर और कड़कू इन जिलों में विशेष रूप से एक ही तरीके के उसी से मिलते जुलते उसके भाई है उसको भी जोड़ने का काम किया है। और यह जो कर्नाटक सरकार ने पहले असेंबली में इसको पास किया, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने लोकसभा में इसको रख करके सदन के माध्यम से पास हुआ और अभी राज्यसभा में ये चर्चा के लिए आया है। इसका मैं समर्थन करता हूं। उपसभापति महोदय, कर्नाटक में जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका बहुत बड़ा कर्नाटक के प्रगति में उनका योगदान है, और देश की आजादी में भी कर्नाटक के जो आदिवासी समाज के महापुरुष हैं उनकी भी गाथाएं पूरे कर्नाटक में गाई जाती है। चाहे मदकरी नायक चित्रदुर्गा के हो, चाहे वीर सुंदर लक्ष्मण बागलकोट के हो, चाहे शिवप्पा नायक शिवमोगा के हो, चाहे मारा नायक मैसूर रीजन के हो, चाहे राजा
वेंकटप्पा सुरपुर के हो, इनकी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने लड़ाई लड़ी देश को आजादी दिलाने के लिए, सभी कर्नाटक के जनता नहीं पूरे देश के लोग आज इनको याद करते हैं और इन्हीं के बदौलत आज भारत स्वतंत्र है और सबसे बड़ा योगदान आदिवासी समाज का ही रहा है। कर्नाटक सरकार के पहले प्रपोजल पे जो हमारी सरकार थी, जो 3 प्रकार के एसटी समाज के लोग थे, जिसमें सिद्धि, परिवार और तलवार, ये तीनों को पहले एसटी का दर्जा मिल चुका है। यह भी हमारे सरकार के प्रयासों के द्वारा ही हुआ। यह कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी सरकार ने जब येदियुरप्पा जी थे तो महर्षि वाल्मीकि, जो आदिवासी समाज से आते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अगर पूरे प्रदेश में छुट्टी की घोषणा करने का काम किया तो हमारी सरकार ने ही उसमें छुट्टी की घोषणा करने का काम किया, स्टेट हॉलीडे। उसी प्रकार से वाल्मीकि भवन का जब वहां हमारी सरकार थी, जब उस समय येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वाल्मीकि भवन भी बना और अब जो हमारी सरकार है उसके माध्यम से जो आज के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयासों से आज जो आदिवासी समाज के लिए एक सेपरेट मंत्रालय, देश की आजादी के बाद 6 दशक से अधिक कांग्रेस ने शासन किया, कर्नाटक में 5 दशक से अधिक कर्नाटक में कांग्रेस की शासन, कांग्रेस के शासन का सत्ता रहा, लेकिन उन्होंने कभी आदिवासियों का मंत्रालय नहीं बनाया। कर्नाटक में आदिवासियों के लिए मंत्रालय बनाने का काम कोई किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी घोषणा हुई है, उस सेपरेट मंत्रालय बना है। और वाल्मीकि समाज के लिए वहां पे डेवलपमेंट बोर्ड भी बना है। और तो और मैं बताना चाहूंगा कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता वहां के जो वहां मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी 1 महीने पहले इस प्रकार का वक्तव्य देना, पेद्दा मतलब मूर्ख, इस प्रकार मूर्ख, अनपढ़, इस प्रकार के बात को करते किया उन्होंने। पूरा समाज ने नहीं, पूरा कर्नाटक में इसको अपमान समझा। अगर किसी आदिवासी मंत्री के बारे में इस प्रकार के वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उन्होंने सरेआम पब्लिकली उन्होंने इस प्रकार का अपमान करने वाली बात कही। और दूसरी तरफ हमारी सरकार वहां पे है आदिवासियों के आरक्षण के लिए कि आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। और अभी पिछले महीने यह निर्णय लिया कैबिनेट में, कैबिनेट में पहले हमारे कोर कमेटी में निर्णय हुआ, फिर कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई कि आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाना चाहिए। और पूरी कैबिनेट ने एक सर्वसम्मति से जो कर्नाटक में आदिवासियों का 3% रिजर्वेशन था उसको 7%, 3 से 7% करने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी अधिवेशन चल रहा है असेंबली का, उस अधिवेशन में भी आदिवासियों को 7% रिजर्वेशन देने का वह दर्जा वहां पे प्राप्त हो जाएगा। यह इसलिए है कि हमारी सोच में, हमारी नीतियां में सबसे पहले कोई आता है तो आदिवासियों के कल्याण ही आता है। अलग अलग प्रकार से, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात हो, वहां पे 2 लाख से ऊपर केवल कर्नाटक के माध्यम से, कर्नाटक सरकार के माध्यम से आदिवासियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम हुआ। और उसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक्स में 3,58,000 लोगों को लाभ देने का काम हुआ। और फेलोशिप, उसमें भी 37 करोड़ रुपए खर्च करके उनको लाभ देने का काम हुआ। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लगातार आदिवासी जो हमारे समाज है, जनजातीय समाज है, उनका किस प्रकार से विकास हो, केवल कर्नाटक का में ही, क्योंकि कर्नाटक से संबंधित बिल है, तो 12 एकलव्य, 1, 2, 3 नहीं, 12 एकलव्य विद्यालय जो है, रेजिडेंशियल विद्यालय जिसमें अच्छी तरीके से रह सकते हैं, सारी सुख सुविधाओं के साथ 12 एकलव्य विद्यालय रेजिडेंशियल खोलने का काम हमारी सरकार के द्वारा वहां पे हुआ है। माननीय, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी समाज के लिए जब 1999 में अटल जी ने जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सेपरेट मंत्रालय बनाने का काम किया। और आज मोदी जी के प्रेरणा से, जैसा मैंने कहा कि कर्नाटक सरकार में भी वहां पे भी आदिवासी का अलग से मंत्रालय बनाया गया।
ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद अगर सर्वाधिक 8 अगर मंत्री हैं तो एसटी समुदाय के 8 एसटी समुदाय के मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हैं। नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से विकास हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं, डोनर मंत्रालय भी बनाने का काम किया और भगवान बिरसा मुंडा जो धरती पुत्र जिनको हम लोग कहते हैं, यह धरती दाता है, धरती दाता है, यह भगवान का स्वरूप है, इसलिए उनका भी अगर गौरव दिवस की घोषणा करने का काम हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले जब पद्मश्री या पद्म अवार्ड ये सब मिलते थे तो आदिवासी के लोग बहुत दूर दराज होते थे, उनको बहुत कम मिलता था। यह मोदी सरकार है जो हमारे जनजातीय समाज के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, उनको ढूंढ ढूंढ करके उनका नाम चयन करके अगर उनको पद्मश्री देने का काम करते हैं तो यह मोदी सरकार है। उनको अभी राष्ट्रपति जी के लिए तो बारे में सब लोगों ने बता ही दिया। मान्यवर, मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि हमको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 1-1.5 महीने पहले मानगढ़ धाम गए थे और मानगढ़ धाम में जब वह गए, वह प्रेरणा का स्थल है। 1500 से लोग अधिक मानगढ़ धाम में उसमें देश की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1500 लोगों की हत्याएं हुई और उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। सरेआम अंग्रेजों ने उनको गोलियों से भून दिया। ऐसे आदिवासी समाज को, जनजातीय समाज को हम कैसे भूल सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सड़क भी बनवाने का काम किया, वहां पे कई बिल्डिंगें भी बनी। अभी कई राज्य के उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है, यह राज्य मिलकर के एक वहां पे जो किस प्रकार से वहां विकास और हो सके, क्योंकि पूरे देश भर के लोग मानगढ़ धाम जाना चाहते हैं, वहां से प्रेरणा ले, देश की एकता अखंडता के लिए प्रेरणा का स्थल बने। उन्होंने कहा यह राज्य मिलकर के एक योजना बनाए और इस योजना के बाद जितना भी पैसा लगेगा केंद्र सरकार देगी और उसको भव्य तरीके से वह प्रेरणा स्थल बनेगा। यह प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है। इसलिए आज आदिवासी समाज मोदी जी के साथ खड़ा है और कोई भी स्कीम हो, चाहे नल से जल की स्कीम हो, अगर देखें तो दूर दराज के क्षेत्रों में अगर पानी पीने की दिक्कत होती थी, कहां से पानी ले आए, तो जंगलों में तो आदिवासी हमारे करोड़ी लाल जी मीना जी बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, दूर दराज जंगलों से ले आने का काम। वहां तो न कुआं था न पीने का पानी की व्यवस्था थी, तो उन्होंने सोचा कि सब नल से जल की योजना शुरू किया जाए। या 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई कि आदिवासी समाज जो किनारे रहता है, जनजातीय समाज, उसको पीने का पानी मिलना चाहिए। और धीरे धीरे 8 करोड़ से अधिक नल से जल पहुंच चुका है। उसमें सबसे अधिक कष्ट जो है दूर करने का काम वह आदिवासी को, जनजाति को होता था, वह मोदी जी ने इस संदर्भ में काम किया है। इसके साथ उनके जो लकड़ी काट के आते थे, लकड़ी के माध्यम से खाना बनाने का काम करते थे, उसे महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी। 200 सिगरेट के बराबर एक धुआं उनके शरीर के अंदर जाता था। अब लकड़ी काट के ले आती थी तो लकड़ी कभी गीली भी होती थी, लेकिन घर के लोगों को खाना बनाने के लिए वह लकड़ी को सुखाती थी, फिर उसके बाद किसी तरीके से भोजन देती थी। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला की शुरुआत किया और उज्ज्वला के शुरुआत के माध्यम से आज आदिवासी समाज के अधिकांश लोगों के बाद उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। और इसी के साथ साथ जो उनके प्रोडक्ट है, महुआ हुआ और जो और फॉरेस्ट के आइटम है, उन शहद है, महुआ है इत्यादि को आज एमएसपी देने का काम, एमएसपी पे ले आने का काम कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए इस बिल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आदिवासी समाज के लिए, जो कर्नाटक के लोग हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते थे, उनके लिए ले आया गया है। और इसका मैं जो
बेटा कुर्बा है उनके जो अब इससे न्याय मिलेगा, कम से कम 5,000 7,000 वहां लोग लगते हैं, उनको न्याय मिलेगा। मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, my attention has been drawn to a statement imparted by the Honorable Chairperson of the UPA on December 21, 2022, mentioning, I quote, "A troubling new development is the calculated attempt underway to delegitimize the judiciary. Ministers and even a high constitutional authority have been enlisted to making speeches attacking the judiciary on various grounds." Unquote. The observations are severely inappropriate, indicating lack of faith in democracy, making this exceptional response unavoidable. Honorable members, you would recall that in my maiden address to this august House, I had underlined that, quote, "In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the Parliament of the day to act in exercise of its constituent power to amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme, not amenable to executive attention or judicial intervention, except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution envisaged in Article 145(3) of the Constitution," unquote. Honorable members, parliamentary sovereignty is quintessential to democracy and is non-negotiable. Subscribing to this is not optional if democracy has to sustain and blossom. I had then emphasized that democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary, and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary, and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Further, I had indicated that this House is eminently positioned to take affirmative steps to bring out congeniality amongst three wings of governance. The statement imparted by the Honorable Chairperson of the UPA is far distanced from my reflections. Delegitimizing the judiciary is beyond my contemplation. It is pillar of democracy. I would urge and expect leaders across the political spectrum to bear in mind not to subject high constitutional offices to partisan stances. Sri Sant Balbir Singh, it is the maiden speech of the Honorable Member.
Mistakenly, it is maiden. It shall be taken as maiden. The honorable member has been very involved with his work, very passionate, and the honorable minister should be very happy that on an issue which touches the heart of the honorable minister, the honorable member is making his maiden speech. सर चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अज दूसरी बारी सानू समा मिलिया कि असी उन्हां लोकां दी खातर उन्हां जनजातियां दी दे लई बोल रहे हैं। ये पहली बारी है साडा सुभाग आ ते पहली बारी असी उस बिल ते बोल रहे हैं जिहदे विच जिहड़ा है जनजातियां नूं उच्चा चक्कण वास्ते उन्हां दे सन्मान वास्ते ये बिल आया। असी इस दा समर्थन करते हैं। मंत्री साहब का धन्यवाद करते हैं कि जिहड़ा उस जनजातियां दे नाल भी संबंधित आ ते अपने उन्हां दे दुख तकलीफां नूं समझण वाले भी है ते उन्हां दी गल भी इत्थे कर रहे हैं। सो हुण तक्कर दहाकियां बधी इन्हां दी गल नहीं सुनी गई ते असी तुहानूं थोड़ी ਜਿਹੀ उदाहरण देना चाहुंदे हां कि असी पहली बारी बोले सी ते पर साडे नाल इन्ना क धक्का हो गया कहंदे तुसीं बोल चुके हैं ते जिहड़े ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ इस बिल का समर्थन करते हैं ते नाल कुछ गल्लां असीं करनियां चाहुंदे हां। सो ये कि इस लोग जिहड़े आ सदियां तो अखों परोखे कीते गए आ ते इन्हां दे ये लोग वो लोग आ जिहड़े कुदरत दे नेड़े रहिंदे आ, कुदरत दा सत्कार करदे आ, हवा पानी धरती नूं प्रदूषित नहीं होण दिंदे। इन्हां लोकां दीयां कोई फैक्ट्रियां नहीं लगियां होईयां। ये लोकां दे हक्कां नूं जिहड़ा है कोई मार नहीं रहे, पर इन्हां दे हक इस करके इन्हां नूं नहीं मिल सके क्योंकि ये अपनी आवाज़ उथों तक नहीं पहुँचा सके। सो बड़ी अफसोस की गल है कि अज उन्हां दे हक्कां दी गल उन्हां नूं जिहड़ा है न्याय मिल रहा। असीं इहदे उत्ते खुशी भी ज़ाहिर करते हैं ते मैं उन्हां जातियां नूं जां किसी गरीब नूं असीं जदों कोई देखते हैं तो उहदी असीं ये नहीं देखते कि इहदी की जात आ, पर उहदी जिहड़ी हालत आ जदों जिहड़ा बंदा आर्थिक तौर ते गरीब आ, समाज दे विच गरीब आ, उहदा हमेशा शोषण हुंदा। शोषण उहदा कौन करदा? उहदा शोषण ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕੋ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 13 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਪਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੂਠ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗਰੀਬ ਮਾਇਆ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਮਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद माननीय संत बलबीर सिंह जी। दोला सेन जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to thank you and my party, All India Trinamool Congress, for giving me the chance to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022. This bill includes Beta Kuruba as a synonym for the Kadu Kuruba community in the list of scheduled tribes in Karnataka. Variations in spellings and pronunciations results in people being left out of beneficiary schemes. Including Beta Kuruba in the list has been a long pending demand of the community. Even though this bill could have been introduced sooner, I welcome and support this bill now because better late than never. I would like to repeat what some of my colleagues in this House and Lok Sabha has already said. Instead of bringing separate legislations for inclusion of communities in the scheduled tribes and scheduled castes category, the Union can bring a comprehensive bill for all states. You can think over it, sir. The Treasury and the government can think over, the department too. This will enable a more well-rounded and extended discussion on the topic. I would like to take this opportunity to highlight the various issues tribal communities around the country are facing. Despite more than 70 years of independence, there are tribes that lack basic services like health and education. The Standing Committee on Social Justice and Empowerment seriously objected to underutilization of funds allocated to the Ministry of Tribal Affairs during 2021 and 2021-22 under the erstwhile schemes Special Central Assistance to Tribal Subplan. This is especially concerning since there are more than 1 lakh tribal villages with more or equal to 25% tribal population where gap exists in various sectors of development. I urge the Minister to explain the reasons for such underutilization of funds despite glaring gaps in development of villages with substantial tribal population. The Standing Committee also noted that the Union government did not release any funds during the various states in several northeastern states such as Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. This is shocking since the northeast region is home to more than 200 tribes. Another issue I would like to raise is the declining population of various tribes, especially in the northeast. As per Census 2011, there are 76 ST communities in the northeast which have a population of less than 1,000 and among them 37 ST communities have a population of less than 100. Because of the small strength of these tribes, their development is often sidelined. As per information laid in Rajya Sabha, latest population figures are not available for these ST communities. The minister stated that communication has been sent to concerned states in respect of decreasing population of some ST communities. However, the steps taken to curb this trend were not listed. Sir, I submit that merely informing the states is not enough. The minister should share the steps that are being taken to preserve the tribes with population of less than 1,000
I also urge upon the government to conduct the census at the earliest. This would help the government in assessing the current strength of tribal communities and to design better interventions for these communities whose strength is declining, because 2021 has already been passed and the census is due already for 1 year and more. Ministry had circulated a draft National Tribal Policy in 2006, which never saw the light of the day. The ministry had claimed that the policy was being updated based on the recommendations of a high-level committee constituted in 2013. The committee submitted its findings in 2014, yet no national tribal policy has been adopted so far. I urge the minister to share the progress made on the national tribal policy and to address the delay in introducing it. I would like to raise the issues regarding education of students belonging to ST communities. There has not been much variation in the number of beneficiaries and targets fixed for the pre-matric scholarship and post-matric scholarship schemes during the last few years. The beneficiaries of the funds released in some states such as Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Meghalaya, Puducherry, Telangana and Uttar Pradesh were shown as nil for the last year. During the last 5 years, only 45 students have been awarded the National Overseas Scholarship. I urge the minister to explain why the ministry could not even successfully award 20 overseas scholarships per year. The union government announced in 2021 budget that 750 Ekalabya residential schools will be built. Out of these, only 367 are functional. Sir, we need to take urgent steps to provide more scholarship and better educational opportunities to students belonging to ST communities. My state, West Bengal, has taken several steps for the welfare of the tribals. Shiksha Shri scholarship has been provided to 1,80,000 ST students of class 5 to 8 during 21-22. 30,000 ST students have applied for pre-matric scholarship of class 9 and 10. 98,000 ST students have applied for post-matric scholarship during 21-22. Sir, 6 development and cultural boards are functioning in the state, our state, for ensuring sustainable development of hill tribes and other ST communities of the state. During 21-22, rupees 75 crore have been allotted for the purpose for various schemes like construction of houses, community halls, youth hostels, drinking water sources, holding of cultural festival, etc. These are only a few of many steps taken by Bengal government for the welfare of the ST communities. Sir, I welcome the inclusion Beta Kuruba in the list of scheduled tribes. However, I want to ask the minister about the process of such inclusion. Many proposals for inclusion of communities to ST and SC lists for other states are pending with the union government. One such proposal is also from Bengal. On 28th February 2022, Bengal have sent a proposal to the central government for inclusion of 11 tribal communities. This was acknowledged by the Minister of States for Tribal Affairs in his reply on 14 December 2022 in Rajya Sabha from unstirred question. To an unstirred question. Till date, no action has been taken, sir. I would urge the minister to kindly share the progress made on this proposal. Once again, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order 4 taken, sir. I would urge the minister to kindly share the progress made on this proposal. Once again, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022. I support the bill. Thank you. Thank you. Honorable Shri Niranjan VC. Honorable Vice Chairman, sir, I am grateful to you for giving me chance to speak on the Constitution Scheduled Tribe Order 4th Amendment Bill 2022. Sir, the state government of Karnataka has recommended to include Beta Kuruba community as synonym of Kadu Kuruba in entry 16 in the list of scheduled tribe of Karnataka. This bill
proposes to modify the list of scheduled tribe in respect of state of Karnataka by amending the Constitution Scheduled Tribe Order 1950. Sir, this is a very good bill, genuine bill, justified bill. I welcome the bill, and also I congratulate Honorable Minister of Tribal Affairs, Sri Arjun Mundaji. And I am very much thankful to him. Yesterday, the Constitution Scheduled Tribe Order, 5th Amendment Bill of Chhattisgarh State was passed in Lok Sabha, and the tribals of Chhattisgarh State very much happy, and they welcome our Honorable Minister Sri Arjun Singh Mundaji for his great contribution for the Scheduled Tribe of India. Sir, similarly, in relation to the state of Odisha also, our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik has recommended for inclusion of 169 tribes and tribal communities or parts of or group within the tribes and tribal communities. In relation to the state of Odisha, they are, sir, like the Karnataka. One is the Sahara. The Sahara is a synonym of Sabara, Sahara and Saura. Sir, in at serial number 59 and 60 of the state list Odisha. And another is Kandha Kumbhara, that is also a synonym of Kandha, by serial number 31 of ST list of Odisha. Jodia, Jhodia, Jadia and Jhodia are also, sir, synonym of Jhodia Poroja, which comes under serial number 55 of ST list of Odisha. Chuktia Bhunjia is also a synonym of Bhunjia. Mankidia, sir, their population is very low. Mankidia is also synonym of Mankirdia in serial number 47. Poroja is also synonym of Pengo Poroja. Bonda Poroja is also synonym of Bonda Poroja in serial number 13 of ST list of Odisha. Durua, Dhurua and Dhuruva should also be included as phonetic variation of Dharua at serial number 17 of state list of Odisha. Poharia as a section of Gond tribe of serial number 22 of ST list of Odisha with area restriction of Kolahandi, Bolangir and Noapada districts, sir. But till date, no action has been taken for the inclusion of this community in the ST list of Odisha, sir. And there is two such particularly vulnerable tribal groups are PVTG group. The PVTG group communities such as Chuktia Bhunjia and Paudi Bhuya have not been included as yet in the ST list. Paudia Bhuya is a sub-tribe of Bhuya at serial number 6 in the state list of Odisha, sir, which has been sent by government of Odisha from 18 November 78 to till date. And another one PVTG Chuktia Bhunjia. Chuktia Bhunjia has been recommended by the state government of Odisha for inclusion as a sub-tribe, Bhunjia tribe at serial number. So, sir, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, प्लीज आप बात कर रहे हैं सदन में. I request our Honorable Minister Sri Arjun Mundaji to take step to include these tribal communities in the state list of Odisha, sir. And we are including the actual, those who are aboriginal scheduled tribe, those who are primitive tribes, those who are genuine tribes. But at the same time, sir, some non-scheduled tribes are, by dint of fake caste certificate, enjoying, snatching away the reservation benefit and also the constitutional rights which is meant for scheduled tribes. They should also be the fake caste certificate holders, employees. They should also be removed from service. Their fake caste certificates should be confiscated. They should be removed and they should be arrested. And all the salary allowances and stipend availed by them should also be recovered by constituting OPDR case. So, sir, I once again request our Honorable Minister of Tribal Affairs, sir. I am the first MP from our
Sabha community, sir. Sabha community, which is ST community. I am first MP in the August House from and amongst the Sabha community in India after 75 years of independence. This is because the grace of our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji. I thankful to our Honorable Minister Sri Arjun Munda ji. He is a very good travel affairs minister in India. He has done so lot. Chhattisgarh amendment, UP amendment, today Tamil Nadu amendment, Karnataka amendment, Himachal Pradesh. So inclusion of our original scheduled tribe in the scheduled tribe list is a welcome step taken by him. And I, sir, lastly, in conclusion, I would say that it is a laudable work done by the Union government and our beloved Minister of Tribal Affairs, Sri Arjun Munda ji. This bill will must help them, our tribal community. With these words, my party BJD support the bills. Thank you. धन्यवाद माननीय निरंजन जी. Honorable Sri Subhash Chandra Bose Pilli. Thank you very much, Deputy Speaker, sir. Before going to the subject, I would like to bring an important issue to your kind notice, sir. The Honorable, my colleague member, Sir, as per rules, you have to speak on the subject. Sir, as per rules, you have to speak on the subject only. Subject, sir. Yes, please. Not, sir. He is talking some nonsense here on our Honorable Chief Minister. Let me give some. Please. Let me give some important. The Honorable member, colleague member, Sri Kankamadal Ravindra Kumar Garu made some irrespectable and irresponsible comments on our Honorable Chief Minister and also made some allegations on Sri Y.V. Subbareddy Garu, who is the chairman of the Tirupati Devasthanam and also relative of our Honorable Chief Minister, sir. This is the habitual disease in this house, the learned member. Please, speak on the subject, how it will be examined. In this context, I am asking through you, sir, the Honorable Member, sir, let him submit the proof on the allegations made by him on our Honorable Chief Minister, and then allow for discussion. We are ready to discuss the matter, any matters raised by him. If not, I am seeking apology for this unprivileged comments on the Honorable Chief Minister and also request you, sir, to delete the comments from the records, sir, from the records. Please speak on the subject now. Sir, I stand to say a few thoughts on the proposed amendments to the Constitution. Let me begin by seeking to place the present amendments into perspective. There have been many amendments to the Constitution, Scheduled Tribe Order 1950, to modify the list of scheduled tribes, and we have had multiple legislations in the past 7 decades on this very important subject, considering that the tribal communities as a priority to be taken up in this session. Sir, recognition of the Kurba community, Beta Kurba community, after demanding to be included in the scheduled tribes category for the last 30 years, the proposed amendment will be enable members of the communities newly listed in the revised list of scheduled tribes to derive benefits under the existing schemes of the government. Further, a better representation would also be entitled to them to the benefits of the reservation in serious and admission to educational institutions. The Global Multi-Dimensional Poverty Index 2021 states that in India, 5 out of 6 poor people belonging to tribal communities. Further, there is a nominal penetration of welfare schemes among the tribal population owing to low awareness regarding government programs due to issues such as language and accessibility barriers.
Sir, as a significant of tribal population still live in extreme poverty, suffers from lacks access of basic education and health facilities, and urge the government to take the requisite steps at the earliest for wider inclusion and of tribals under the welfare schemes and to curb these prevailing issues. Sir, problems of health and nutrition. Tribals are prone to be affected by the diseases like malaria and tuberculosis, and also instances of iron deficiency, anemia, and high infant mortality rates, but often retorting unscientific practices, local beliefs, and self-medication. The government must take proactive measures to encourage health workers from the tribal community to guide tribal patients, help patients like advantages of welfare schemes, and counsel them and prevent and promote healthy behaviors. According to the Unified District Information System for Education Plus, the gross enrollment ratio of scheduled tribe children has increased 2.51 crore in 2021-22 from 2.49 crore in 2020-21, sir. But as per the Tribal Development Report 2022, nearly half of the total children enrolled in schools and tribes, 48.2% dropouts even before they complete the class 8, sir. Please conclude. I am going to conclude, sir. Sir, 1 minute, sir. Our Andhra Pradesh government is enacting various schemes for the upliftment of the total population, such as free power supply to ST families, financial assistance to ST women under YSR Chayuta scheme, and even the YSR Sampurna Poshana Plus to supply nutrition food in the tribal mandals. These are all the... Sir, please conclude. Subhash Chandra ji, please conclude. Sir, with all these things, I support this bill, sir. Thank you. Mane Santosh Kumar P. Mane Santosh Kumar P. Not present. Sri Ramji. Not present. Sri Jagesh to speak in Kannada. 5 minutes, sir. Thank you for giving an opportunity, sir. Since it's about Karnataka, I would like to speak in my mother tongue. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. 70 ವರ್ಷ, 70 years, 15 ಸರ್ಕಾರ, 15 ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಮೋದಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಕುರುಬ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾಚಾರ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲ್ಲವರಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಪ್ಪಲು ಮೆಚ್ಚಲು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ
I would like to give to this house, especially the Siddhi community. ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅದು ಯಾವ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಜನರೇಟರ್. ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. ದ ಅಗೋನ್ ಈಸ್, after giving the generator and after putting a light, there was one snake bite and his elder person who lives in that family died. See, ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ, ಅದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಸೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ಮೋದಿಯವರೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ 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 ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ಗುಣ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚೇರ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ನಮಗಳಿಗಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆಲೋ, ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೋ ಮೆನಿ. ಇನ್ ದಟ್ almost 50 castes have been included. I have not even heard of those names. Adivan, Barada, Bauchi, Bilgarchi, Dolbil, Dungri Bill, Dungri Garcia, Mewasi Bill, Rawal Bill, Tadavi Bill, Bhagawali, Bilal, Vasava, Basava. See, I have not heard of these names, but I am so grateful. Adbhuta, Ananya, Amoga, ಮೋದಿಜಿ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿನಂತೆ ಕರತಾಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, the man who belongs to a backward community, who was the chief minister before, he himself will criticize his own caste people. See, the scenario is like that. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಹಳ ಖೇದದಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಂತೆಂಥ ಅನಾಚಾರಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಂತೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಈ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಷ್ಟೋ ಇಲಾಖೆಗಳು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಲಾಖಾಸ್, ನಾಟ್ 1, 2, 3, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಎ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೋದಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000ನೋ 75,000ನೋ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ 50,000 75,000 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾತಿವಾದವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ತುಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವರ್ಷ ಆಳಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ದಿಸ್ ಮೈ ಮೇಡನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸರ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಮಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಲ್ is ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್,
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಯಾವುದು ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದ 7th ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಂತ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. Thank you, Honorable Sri Jagesh ji. Now, Dr. M. Thambi Durai. Honorable Deputy Chairman, thank you for giving the opportunity to speak on the bill. In this winter session alone, 3 bills related to the revising the list of scheduled tribes in Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh are scheduled to be brought up for passing by the government headed by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I proudly say that this yet another example of our Prime Minister Narendra Modi ji commitment to social justice. Sir, as Karnataka government recommended to include a name Beta Kuruba community as synonymous Kadu Kuruba in the entry 16 the list of the scheduled tribes Karnataka, sir. I welcome this, sir. If you take reservation, when Madras province was that Karnataka also part of Tamil Nadu, Andhra and Kerala, Orissa part of all this Madras province. Sir, in the Madras province, if you take the list of the reservation given in Karnataka, some communities Kuruba, Kurumans, Naik, Valmiki, Toda. These are the communities preserved in tribal in Karnataka. Sir, if you take Tamil Nadu, part of my area is Krishnagiri Taluk, also, only 30 kilometers from Bangalore. In that community, if you take Valmiki, here tribal, but Tamil Nadu is still backward class. This is the difference. If you Baduga community take, for example, Toda like that, this is the OT people, they are also, here reservation is there, Tamil Nadu is not having. Sir, like that, Naik, these are community in Tamil Nadu also there, but they are backward classes. Therefore, this kind of confusion must not be there. That is why, if you see the history of free India, the concept of reservation for the socially and educationally backward, deprived people in education and jobs is the greatest contribution of Dravidian movement. In 1927, in Madras province, when Dr. Subbarayan was the chief minister at that time, he brought the reservation for these backward classes, Justice Party, that is at that time Dravidian movement. There, at the Dravidian movement, Karnataka also part of that is encouraged that. Therefore, when these communities are included, that's why this is not included in Tamil Nadu also. This has been already government of Tamil Nadu under leadership of Edapadi Palanichami also recommended this Valmiki community and even fishermen community, Tamil Nadu fishermen community, sir. Fishermen community is, they are also hunters. As hunting taking place in the forest, this Tamil Nadu fishermen also take fishermen community also. They are doing the hunting in the sea. They are also precariously, they are doing their job. And there is a lot of demand for a long time. This Tamil Nadu fishermen is requesting Honorable our the central government and the minister, and they came a delegation. I also part of the delegation and tried to meet our Honorable Minister. Therefore, I am requesting that demand of this Tamil Nadu fishermen is to be included in the tribal thing as Valmiki and Kuruba community, and which is and also Kurumans and Boda community. All this must be included, sir. I once again requesting this. This is the justice as given as Narendra Modi has done very well for the backward class people as well scheduled tribe people. Appreciate that, but let them consider the request of the state government already recommended to include these communities, which I said that like fishermen, other communities in tribal communities. Sir. Thank you very much.
माननीय लहर सिंह सिरोया। आदरणीय सभापति जी, जनजातियों के कल्याण के संबंध में इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए बोलने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं हमारी कर्नाटक सरकार का और केंद्र सरकार का अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमारे लिए लाए हैं, हमारी जनजातियों के विकास के लिए। और अर्जुन मुंडा जी का मैं अभिनंदन और अग्रिम बधाई देता हूं कि हम ये बिल पास करने वाले हैं सर्वसम्मति से। अध्यक्ष जी, अभी कुछ बहुत कहा गया, हमारे अरुण सिंह जी माननीय ने उन्होंने कहा था, हमारी जनजातियों के राजस्थान के संबंध में भी कहा, मानगढ़ के संबंध में भी कहा और कर्नाटक के संबंध में भी कहा। अध्यक्ष जी, मैं जिया हूं उस जीवन को, क्योंकि मेरे पिताजी राजस्थान में कर्मचारी थे और उनकी पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह हुई जो भीड़ इलाके हैं और घनघोर जंगल हैं, जैसे सागवाड़ा है, दरियावाद है, जड़ोल है, लसाड़िया है। ऐसी उदयपुर और उस जिले की तहसीलों में जो जंगल है जहाँ किसी तरह के साधन आज भी नहीं है, इस जगह मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई। तो मैंने आदिवासियों की पीड़ा को मैंने समझा है, जिया है और देखा है। और वहाँ से जब मैं कर्नाटक गया तो कर्नाटक की जनता ने मुझे जो प्यार और स्नेह वहाँ दिया और जिस तरह से मुझे वहाँ रखा, मेरी किसी भाषा पर उन्होंने एतराज़ नहीं किया, मेरी किसी जाति पर एतराज़ नहीं किया। उस कर्नाटक प्रदेश की इस जनता की तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, 6 करोड़ जनता की तरफ से। आज हम सर्वसम्मति से विधेयक पास करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, मैंने जब ये अरुण सिंह जी बता रहे थे और हमारे भाई जग्गेश बता रहे थे सिद्धि कम्युनिटी के बारे में, तो मैं तो उन जंगलों में विचरण किया है, मैंने चुनाव के दौरान भी और अदरवाइज भी। जो उस जीवन में जो सिद्धि अफ्रीकी मूल के जो सिद्धि कम्युनिटी है वो 300-400 वर्षों से वहाँ जंगलों में रहती है और वो अभी भी उनके जो आकार वगैरह सब अफ्रीकन जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी भाषा कन्नड़ हो गई है। तो हमारी सरकार ने, हमारे येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक सिद्धि कम्युनिटी के एक व्यक्ति को MLC बनाया, शांताराम सिद्धि को। तो ये हमने जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए मैं आज उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ इस मंच के और आपके माध्यम से। अध्यक्ष जी, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आज इस बिल पर बोलने के लिए मुझे मौका मिल रहा है और मैं इसका समर्थन करता हूँ पुरजोर तरीके से। लेकिन जैसे हमारे जग्गेश जी ने कहा, ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात भी मैं कहूँगा कि आज ऐसे बिल पर जो जिसमें कर्नाटक को आदिवासियों के संबंध में चल रहा है और हमारे कांग्रेस के कोई व्यक्ति आज मौजूद नहीं है और आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज उनका जो आदिवासियों के लिए उनका कोई चिंतन, एक व्यक्ति भी उनकी तरफ से आज यहाँ नहीं है। पूरी की पूरी हाँ बोले हैं, लेकिन अगर जो ये बोलते उनके सीनियर नेता बोलते, रघव चड्डा बोलते या और कुछ सीनियर आदमी बोलते, ऐसा विषय है और जो तो उसको आर्टिकुलेट करते, समस्याओं के बारे में चर्चा करते तो हमें अच्छा लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर प्लीज। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से आदिवासियों का ध्यान रखा है, जैसे मानगढ़ का जो उदाहरण हमारे अरुण सिंह ने दिया था, वहाँ पर 1500 व्यक्तियों का नरसंहार हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। जो जलियांवाला कांड से भी बहुत बड़ा, हमारे संत बलबीर सिंह जी हमें ध्यान दें कि जलियांवाला कांड से भी ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए थे, 1500 लोग। और आज़ादी के 70 वर्षों तक किसी ने उस जगह को याद नहीं किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ आए और शीघ्र ही वो जो मानगढ़ का जो है गुरु गोविंद जी का जो बलिदान का है उसको वहाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषणा करने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारी मेवाड़ की जनता को, राजस्थान की जनता को कितना इसमें सुकून मिला है अध्यक्ष जी। और दूसरा जो हम आदिवासियों के लिए जो हम चर्चा करते हैं, आदिवासियों का बहुत बड़ा इलाका, जो बहुत बड़े लोग वहाँ नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को लगातार पिछले 8 वर्षों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनका भी आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं। और हमारे देव जी मुख्यमंत्री, उनको पता है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए कई वर्षों से उन्होंने क्या क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी जो सारी बातें हमारे जो मैं पॉइंट नोट करके लाया था, सारी बातें हमारे कई वक्ता कह चुके हैं, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ पुनः। और मेरा आज जो सौभाग्य मिला कि आदिवासियों के जनहित के लिए, जिनके लिए जो मैं हमेशा काम करता रहा हूँ, उनके लिए मुझे आज समर्थन करने का मौका मिला है। मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में शामिल किए जाने का स्वागत करती हूँ। यह सराहनीय कदम है कि कर्नाटका में ट्राइब्स को जोड़ा जा रहा है, मगर दूसरी ओर केंद्र सरकार की ही लापरवाही की वजह से झारखंड में कई आदिवासी गांवों के लोग अपनी ही धरती से उजड़कर माइग्रेट होने को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। सभी जानते हैं कि झारखंड की धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है। उनमें से कोयला बहुत बड़ी मात्रा में है जो कि पूरे देश को सप्लाई किया जाता है। जब केंद्र सरकार के अधीन की कोयला कंपनियों द्वारा सावधानीवश बंद खदानों के महुआ जी विषय पर बोल रही है। विषय पर ही बोल रही हाँ, हूँ। विषय पे। इसमें कुछ आदिवासी उजड़ रहे हैं, इसीलिए बंद खदानों के मुहाने को बंद न करके खुला छोड़ दिया जाता है तो आग हवा के संपर्क में आकर तेजी से फैलती है और जमीन के अंदर अंदर वो आग फैलती हुई आदिवासी बस्तियों को तबाह कर रही है। धनबाद में तो झरिया में वर्षों से हो रहा है। एक नया मामला सामने आया है कि झारखंड के रांची जिला अंतर्गत खलारी प्रखंड के करकट्टा स्थित केडीएच के बंद कोयला खदान में आग लगी हुई है और जिससे उस इलाके के रहने वाले लोग बहुत मुसीबत में हैं, संकट में हैं और खुले और भूमिगत खदान में बड़े पैमाने पर वो आग फैलती ही चली जा रही है। सीसीएल प्रबंधन को बार बार बोलने के बावजूद वो नहीं देख रहे हैं, उस पर केयर नहीं कर रहे हैं। ये विषय से अलग है। आप कोयला खदानों पर बोलिएगा तो ये विषय आएगा। हम चाहते हैं कि वो आदिवासी उजड़े नहीं, उनको अपने गांव में रहना चाहिए क्योंकि जमीन के अंदर आग है तो वो बहुत डरे हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज आपस में बात नहीं। प्लीज आपस में बात नहीं। नाउ ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्लाई। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका आभारी है कि इसके पहले तमिलनाडु पर और अब कर्नाटका राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातीय संशोधन चौथा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने के लिए अपने अनुमति दी और सदन में चर्चा किया। काफ़ी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं उन सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। पर मुझे आश्चर्य है उपसभापति महोदय कि इस देश के सर्वोच्च सदन में आज उन आदिवासियों से संबंधित चर्चा हो रही है जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। कर्नाटका से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित, नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले लोगों से संबंधित, पर हमारे प्रमुख विपक्षी दल के लोग नहीं हैं। अब आप आपस में बात न करें। आप हैं ये ऐसे विरोधी दल जिन लोगों ने देश में बहुत लंबे कालखंड तक शासन किया, बहुत सारे सपने दिखाए और इसलिए आज आदिवासी पूछता है, मैं जिनकी राह देखता हूं बरसों से जागकर, मैं जिनकी राह देखता हूं बरसों से जागकर, वो रोशनी का सपना दिखाने वाले क्या हुए? वो जो इधर उधर रहने वाले लोग, जो हमारे पास रहने वाले, वो दोस्ती का नाम से हमें लूटने वाले क्या हुए? और आज विरोध करके निकल गए। लिस्ट ऑफ बिजनेस में जब ट्राइबल्स का मामला आता है तो इसी तरीके से लोग करते हैं। ओपोजिशन नहीं है, उनकी बात आती तो और अच्छा लगता। कुछ माननीय सदस्य है अपनी बातों को कहा है, बिल से संबंधित भी और बिल से हटके भी।
बिल से हटके अगर कहना है तो दिल से कहिए, और नहीं तो बिल पर कहिए। इसलिए ये जो कर्नाटका का जो विषय है, इसकी भी आबादी बहुत कम है। काडू कुर्बा, बेटा कुर्बा। काडू कुर्बा लिस्टेड है, बेटा कुर्बा लिस्टेड नहीं था, जिसको आज इस सदन में लाकर चर्चा करके सरकार अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन सारे बेटा कुर्बा को न्याय देने जा रहे हैं। और यह हमारे जो प्रमुख विपक्षी दल के नाते रहने वाले लोग आज इस सदन में नहीं हैं, तो मुझे फिर एक किसी ने लिखा है कि तेरे मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने विरोधियों का एहतराम करता हूं। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं कल भी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदन में इन सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हो रही है और सारे राज्यों के प्रति, राज्य के रहने वाले उन लोगों के प्रति जो अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए अपना जीवन जिया है, उसे न्याय मिले, इसका प्रयत्न जारी है। और राज्यवार, इसीलिए क्रमवार। कुछ माननीय सदस्य ने कुछ इस तरह का प्रश्न उठाया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल या प्रस्ताव आना चाहिए सारे राज्यों का मिलाकर। तो मैं माननीय वैसे सदस्यों को इस सदन में कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी एक एक को चुन कर कैसे संभालना चाहिए, उसको दिखाने का काम इस सदन के माध्यम से देश को करना। कि जो छूटे हुए लोग हैं, जो पीछे हैं, जो कतारों में रह गए पीछे, उन्हें आगे लेके आना है। जो संविधान की मंशा है, जो लोकतंत्र की मंशा है, जो हर किसी की चाहत है, और इसीलिए देशवासियों ने संविधान को आत्मसात किया और इसलिए कहा कि जो पंक्तियों में पूछे है एक कतार में आ जाए, इसे न्याय मिलना चाहिए और इसे विशेषाधिकार मिलना चाहिए और संविधान का सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन वो पीछे से आगे नहीं आ पा रहे, और ऐसे खोज के माध्यम से, क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जन सबसे बड़ी ताकत होती है। वो ताकत हीरे के रूप में है, क्योंकि वो अपने संस्कृति विरासत को लेकर, अपनी पहचान को लेकर मरने मिटने वाले। आजादी के संघर्षों में यदि आदिवासी इतिहास को देखा जाए तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि उन दिनों में अंग्रेज तो जुल्म करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे लेखकों ने भी कलम चुराई है, इतिहासकारों ने भी कलम चुराई है। लेकिन अब वैसे लोगों को भी मान्यता देने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस सरकार में हो रहा है। और इसलिए स्वाभिमान दिवस के रूप में अब इस देश के आदिवासी ही नहीं बल्कि देश मनाए। स्वाभिमान देश का होता है, स्वाभिमान देश के समुदाय का होता है, देश के समाज का होता है, चाहे वो जनजाति वर्ग का हो या किसी भी वर्ग का हो। देश के लिए अगर मरता है तो देश उसे सैल्यूट करता है, देश उसको सलाम करता है। ये कहने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने 15 नवंबर को स्वाभिमान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इस तरीके से उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पहचान हो। मैं तमिलनाडु के चर्चा के क्रम में इस बात को कहा और फिर से मैं बल देना चाहता हूं कि नए एजुकेशन पॉलिसी में इस देश के तमाम डायलेक्ट को, तमाम लैंग्वेज को, जो ट्राइबल आदिकाल से, आप जाएंगे नागालैंड के
पहाड़ी में 16 पहाड़ों में 16 भाषाएं हैं। कितने बड़े भाषा विज्ञानी हैं जिसको कांग्रेस के जमाने में महत्व तो नहीं मिला, अब नया एजुकेशन पॉलिसी में उन्हें मान्यता मिल रही है। इस तरीके से देश के सरहदी इलाकों में रहने वाले तमाम जनजाति समुदायों की जो भाषाएं हैं वो नए एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कैसे सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धन हो, इसके लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री काम कर रहा है। तमाम मंत्रालयों के साथ मिल करके उनके मौलिक अधिकारों से लेकर विकासात्मक योजनाओं को कैसे नीचे धरातल तक पहुंचाया जाए, इस बात का उदाहरण है कि नल का जल हर घर में पहुंचे। आप जानते इस देश में संपदा की बात हो, प्रकृति की बात हो तो उन जंगलों की बात होती है, उन पहाड़ों की बात। आज जितनी भी नदियां निकलती है समतल से नहीं निकलती, पहाड़ों से निकलती है, स्रोत निकलती है। आप खादानें जितने भी देखते हैं, जितने भी मिनरल्स देखते हैं, उन पहाड़ों में मिलती है। जंगलों में पेड़ पौधों, सारी चीजें, प्राकृतिक संपदा उन्हीं लोगों के साथ रहने वाला उन भाइयों के साथ मिलती है। और इसलिए लगातार ये सरकार, खासकर ट्राइबल अफेयर्स, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है कि आत्म स्वाभिमान के साथ जनजातीय समुदाय, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, पुनर्जागरण के साथ आगे बढ़े, कि उन्हें स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, भाषा में, संस्कृति में, परंपरा में, जीवन पद्धति में, उनके जो अक्षुण्ण परंपराएं हैं उसको जीवंत बना के रखने में हम जो भी कर सकते हैं मिल करके करें। और इसी कड़ी में आज उसे न्याय देने के लिए बेटा कुर्बा का प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। The question is that the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Arjun Munda to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. Those in the question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now special mentions. श्री विप्लव कुमार देव। महोदय, सोनामुड़ा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का कार्य तेज करने के संबंध में महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह सोनामुड़ा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का कार्य तेज करने के लिए बांग्लादेश सरकार से बातचीत करे। आपको बताना चाहूँगा कि जलमार्ग में ट्रायल रन के बाद जो कमियां नज़र आई थी उसे जल्द दूर करने, इस जलमार्ग को जल्द शुरू करने की बात की थी। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने ट्रायल से पहले अपने वहाँ फ्लोटिंग जेट्टी लगा लिया था। अभी वर्तमान में स्थायी जेट्टी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, मगर इस जलमार्ग के सफल संचालन के लिए बांग्लादेश के हिस्से में नदी का ड्रेजिंग होना जरूरी है। उस वक्त भारत सरकार ने बांग्लादेश से आग्रह किया था
कि यदि अनुमति मिले तो वह स्वयं इस हिस्से में भी ड्रेजिंग कर देंगे। तब बांग्लादेश की ओर से कहा गया था कि वे स्वयं ड्रेजिंग करा लेंगे, मगर अब तक बांग्लादेश के हिस्से वाले ड्रेजिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया। अतः बिना ड्रेजिंग के जलमार्ग का संचालन नहीं हो सकेगा। इसलिए भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह है कि वह बांग्लादेश सरकार से बातचीत करे, सुनमुरा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का ड्रेजिंग का कार्य शुरू करने का प्रयास करे और इस जलमार्ग के शुरू होने से भारत और बांग्लादेश में आर्थिक गतिविधियों की केंद्र के लिए त्रिपुरा और इसके आसपास के राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद विप्लव कुमार देव जी। द नेक्स्ट स्पीकर इज दिनेश चंद्रा जमाल भाई अनवालिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। देश के नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन विषय महत्वपूर्ण होते हैं। आज प्रत्येक परिवार को मकान उपलब्ध करवाना माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना भी है। मकान बनाने हेतु ईंट अति आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंट उद्योग लगाने वाले व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु पिछले कुछ समय से ईंट उद्योग पर जीएसटी बढ़ाई जाने से ईंट व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईंट पर जीएसटी बढ़ने से ईंट की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे देश के लोग मकान बनाने हेतु ईंट का विकल्प खोज रहे हैं। ईंट के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारियों, छोटे कारीगरों एवं अनेक परिवारों पर भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। ईंट पर लगने वाले जीएसटी कर में 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। साथ साथ ईंट भट्ठों की दूरी की भी परेशानियां उत्पन्न हुई है। 1 किलोमीटर की दूरी व्यावहारिक नहीं है। इन सब कारणों से ईंट उद्योगों पर खतरा मंडरा रहा है। जहां कंपोजिशन स्कीम के तहत 1% और रेगुलर स्कीम के तहत आईटीसी के साथ 5% के पुराने स्लैब की बहाली की जाए तथा जीएसटी की श्रेणी को घटाया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ईंट व्यापारियों के लिए एक सरल नियमों का तंत्र विकसित किया जाए, जिससे ईंट के उद्योग में कार्य करने वाले लाखों करोड़ों मजदूरों, कारीगरों के साथ देश के सामान्य जन उससे लाभान्वित हो सके और अपने मकान बनाने का सपना आसानी से पूरा किया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेंद्र गहलोत। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अजमेर पुष्कर मेड़ का 59 किलोमीटर रेल लाइन की जन उपयोगिता की ओर आकर्षण करना चाहता हूं। इस लाइन का सर्वे 2010 में प्रस्तावित होने के बाद सन 2013 और 14 में बजट में शामिल किया गया था। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इस परियोजना का सर्वे कराकर पुनः आदेश जारी किए हैं। तीर्थराज पुष्कर हिंदू धर्म के सारे तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि इस तीर्थ के बिना तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं होती है। इस प्रकार आसपास के क्षेत्र में लोक देवता वीर तेजा जी, संत जामेश्वर जी, संत लक्ष्मीदास जी, बाबा रामदेव जी, बाबूजी महाराज, मीराबाई के स्थान होने से वर्ष भर तीर्थयात्री विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला का भी आयोजन बड़ी संख्या में यात्रियों का आगमन होता है। इस रेल खंड के बन जाने से लाखों लोगों को लाभ होगा। रेल के राजस्व की दृष्टि से
पेट्रोल, सीमेंट, खनिज उत्पादन, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग इस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। मालगाड़ियों के द्वारा माल भेजा जा रहा है। उत्तम मार्ग के बनने के समय की बचत के साथ माल की ढुलाई का खर्चा भी में कमी हो जाएगी। रेलवे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से अंत में सैन्य गतिविधियों के मार्ग में भी सुगम विकल्प होगा। वर्तमान में ट्रेन मार्ग मारवाड़ जंक्शन तथा अजमेर रास्ते से होकर निकलने वाली दिल्ली अहमदाबाद का व्यस्त रूट में इस रूट से 100 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है। उत्तर रेल के रूट पूर्ण होने से दूरी घट जाएगी। पुष्कर, मेड़ता, अजमेर, चित्तौड़, रतनगढ़, इंदौर दक्षिण भारत से सीधा जुड़ जाएगा। जोधपुर तथा बीकानेर मंडल से संचालित होने वाली ट्रेनों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा, जिससे जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। अंततः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि इस सदन के माध्यम से सर्वे और काम को शुरू कराया जाए। धन्यवाद। श्री गुलाम अली। Thank you, Deputy Chairman. I would like to thank the Government of India and Shri R.K. Singh, Minister for Power, for this personal intervention in the improvement of power sector in Jammu and Kashmir. It's because of Prime Minister's special focus, the hydroelectric projects like Kiru Cover, Akkal Dhul and Rattle on the Chenab Basin, with a combined capacity of around 3000 megawatt, are in the process of execution. Honorable Sir, this capacity is equivalent to the capacity addition in J&K for the last 75 years. Honorable Sir, the Government of India has also been generous towards implementation of transmissions and distribution projects in the UT under various centrally sponsored schemes, the fruits of which have already beginning to be felt. To anchor this gain achieved in this sector, the Government of India has already granted technical sections for a transmission plan for J&K costing around rupees 4,971 crores. White letter number mentioned, Division 1 on dated 18/6/2001. Implementation of this plan within next 2 to 3 years is very essential to ensure that quality power 24/7 is available to the people of Jammu and Kashmir. I would request the Honourable Minister to for a time plan for the government for implementation of the projects in the transmission sector in Jammu and Kashmir and strategy of their funding. As I have already mentioned, that these projects should come up in next 2-3 years for enabling the fruits of the hitherto investment in power sector of Jammu and Kashmir to reach the consumers. So, Honourable Chairman, I therefore urge the government for fix a timeline for implementation of transmissions and distributions projects in UT of J&K and ensure its timely completion. Thank you, sir. Thank you. Sri Santosh Kumar P. Thank you, Vice Chairman. Need for setting up branch MSME Development Institute in Kannur. The MSME sector is one of the fastest growing and employment providing sectors in Kerala with relatively lower investment. This is particularly evident in the case of North Kerala, in which MSMEs play
a critical role in economic development. The region occupies a unique position in the MSME sector with a concentration of many khadi, handloom, handicrafts and other traditional and indigenous industries. Many of the MSME units in northern Kerala are engaged in manufacturing locally specific unique products with geographical indicator and IPR. However, there is a lacuna in skill upgradation training, identifying and motivating entrepreneurs, technology innovation and providing financial assistance. This is mainly because of the absence of robust training infrastructure in the region. In Kerala, there is only one MSME development institute which is situated in Thrissur. Unlike other states, Kerala doesn't have a branch MSME development institute. As of now, most of the entrepreneurs in the 4 districts of northern Kerala, namely Kasaragod, Kannur, Wayanad and Kozhikode, are forced to depend on the branch MSME development institute in Mangalore, Karnataka for any technical assistance. Many entrepreneurs complain about the wrong information that they received from private agencies. Against this context, establishing a branch MSME development institute at Kannur would immensely benefit the growth of the MSME sector in the region. The newly constituted branch MSME development institute at Kannur can act as a nodal agency in fostering the spirit of entrepreneurship and promoting traditional industries. More importantly, it can significantly reduce the burden of the MSME DI in Thrissur and Mangalore. I therefore urge government to set up a branch of MSME Development Institute at Kannur in Kerala. Dr. M. E. Yagnik, not present. Dr. Lakshmikant Bajpai. सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु मेरठ महानगर में पात्र पंजीकृत लाभार्थी लगभग 1200 हैं। पूर्व की विभिन्न योजनाओं में अधूरे मकान पड़े हुए 2193 हैं। वर्तमान में पात्र पंजीकृत 1200 लोगों को आवास मिलने के बाद शेष 993 आवास अन्य पात्र लोगों को नए पंजीकरण खोलकर दिए जा सकेंगे। बीएसयूपी योजना में वर्ष 2008 और 9 में गरीबों के 744 आवास बनाने हेतु डाबका और दायमपुर में निःशुल्क जमीन दी गई थी। इस योजना की लागत 19 करोड़ 14 लाख 96 हजार थी। योजना की अवधि 3 वर्ष की थी, लेकिन आज भी 497 मकान अधूरे पड़े हैं। इसी प्रकार काशीराम योजना में 2008 से 13 में मेरठ विकास प्राधिकरण को 32 करोड़ रुपया मिला था। प्राधिकरण को बराल, प्रतापपुर और काशी में 952 मकान बनाकर आवासहीनों को देने थे, जो आज भी अधूरे खड़े हैं। बीएसयूपी योजना के अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए तथा काशीराम योजना के अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने हेतु 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि आवासहीनों के प्रार्थना पत्रों की जांच हुए लगभग 2 वर्ष हो गए, लेकिन 1200 पात्र आवासहीन हो रहकर अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। काशीराम योजना बंद हो चुकी है, उसके लिए अब धनराशि मिल नहीं सकती। 32 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और व्यर्थ में बर्बादी हो रही है। समाजवादी आवास योजना भी बंद हो चुकी, उस मद में भी अब धनराशि आवंटित नहीं की जा सकती। मेरा यह सुझाव है कि इन अधूरे पड़े हुए 2193 आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करके पूर्ण करने हेतु 46 करोड़ रुपया तथा आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु लगभग 15 करोड़ रुपया मुक्त करके पात्र 1200 आवासहीनों को आवास आवंटित किया जाए और शेष बचने वाले 993 आवासों को नए पंजीकरण खोलकर आवास देने पर विचार किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की आवासहीनों को आवास देने की योजना मेरठ में पूर्ण रूप से साकार हो जाएगी। सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिकता पर इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान देकर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जी के वासान। Chairman sir, for allowing me to raise an urgent important matter in this august house. This is regarding need to enhance infrastructure for the benefit of differently abled persons. Sir, the population of differently abled persons as the proportion of our total population is rising due to various medical issues, road accidents and various other reasons. As per census 2011, there are 2.68 crore disabled persons, which is
2.21 of the total population of the disabled persons. Among the disabled persons, 56% are male, 44% are females. A majority of 1.86 crore of the disabled population reside in rural areas and 0.81 crore live in urban areas. People with disabilities suffer undue hardship and they continue to be marginalized, discriminated against and abused. It is essential that access to health care and rehabilitation be offered to persons with disabilities. Physical medicine and rehabilitation, also known as psychiatry, play a prominent role in the rehabilitation of people with disabilities. Different abled people are certified by PMR and other specialty doctors according to guidelines given by Right of Person with Disabilities Act 2016 for availing government benefits under different schemes. It is in this fitness of things that National Medical Council has included PMR in MBBS curriculum and also in the training of students. Sir, I would urge the government to ensure that PMR departments are established in all medical colleges with good sanction strength of faculty and necessary infrastructure created in hospitals. In addition, adequate funding should be provided for innovative projects in rehabilitation, research and production of prosthetics and orthotics in government institutions should be enhanced so that they are available to the differently abled people at affordable rates. Thank you, sir. Thank you, honorable members. I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held on today, that is on the 22nd of December 2022, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022 after its introduction, consideration and passing by Lok Sabha, 8 hours. Now, the message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 22nd December 2022 adopted the motion referring the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022 to a joint committee of the Houses consisting of 21 members from the Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha, and recommending to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do concur in the said motion and join the said joint committee and communicate the names of the 10 members to be appointed by the Rajya Sabha to the joint committee with instructions to report to Lok Sabha by the last day of the first week of the second part of budget session 2023. Sri Jaggesh. Thanks for the opportunity, sir. Urgent measures to protect Karnataka from coffee growers. The coffee heartland of Karnataka, comprising Kodagu, Chikmagaluru and Hassan district. Coffee planters have suffered badly due to destruction caused by heavy rain between July and September of the last monsoon season. The impact of the rain continues with diseases affecting plants and estate infrastructure suffering long-term damages. Unpredictably, weather conditions are helping pests to breed and new diseases to emerge. Drastic changes in climate patterns over the last few years have adversely impacted India's coffee production and the quality of the crop. Fruit rot, stalk rot, root rot and other damage to crop has been done due to heavy rainfall and landslides. Most growers fear that such climatic patterns could wipe out plantations. The production of the crop for the year
2022 is estimated to be some 35% lower and have impact on export. Moreover, the unsettled market prices and the cost of the financing is one of the biggest challenges of the coffee sector, with bank insisting growers to provide collateral for financing. High rates of interest and growers are unable to repay loans, resulting outstanding of lakhs of short-term and long-term loan accounts. The account of many coffee growers have turned to non-performing assets, NPA, and the growers now facing banks' recovery proceedings. Under these conditions, I urge the government to take immediate step to exclude coffee plantation from recovering proceedings under the provision of the Act and to restructure of outstanding loans and the special package in the line with the special coffee term loan. Thank you, sir. Shri Arun Singh. सर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर होते हुए सिंगरौली तक नए राजमार्ग जो 135 है, इस नए राजमार्ग की बनने से करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी तथा कई जिलों में इसके निवासियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। औद्योगिकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 24 मार्च 2015 को लगभग 7 साल पहले प्रस्ताव मंगाने को कहा था, लेकिन अभी तक 6 सालों के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय में शीघ्र से शीघ्र उचित कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। Shri Sanjay Singh, not present. Lieutenant General Dr. D.P. Watch. माननीय सभापति जी, मेरा स्पेशल मेंशन हिसार हवाई अड्डे के सर्वोत्तम यानी कि ऑप्टिमम इस्तेमाल के लिए है। हरियाणा सरकार हिसार हवाई अड्डे का एक महत्वाकांक्षी एविएशन हब के रूप में विस्तार कर रही है। यह दिल्ली के कंप्लीमेंट्री विकल्प के रूप में एशिया की सबसे बड़ी हवाई पट्टी होगी। यहाँ पर एविएशन ट्रेनिंग, कार्गो सुविधाएं, पार्किंग सुविधाएं दिल्ली की कंजेशन कम करने में मदद करेंगी। 3 विश्वविद्यालयों के साथ एग्रो हब यानी कि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, फार्मा, स्टील उद्योग हब और अग्रोवा जैसे पर्यटन और तीर्थ स्थान दिल्ली के 170 किलोमीटर घेरे में हैं। इस दिल्ली के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। एक बड़ा सैन्य स्टेशन होने के कारण इसका उपयोग दोहरे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। हिसार से दक्षिणी पंजाब के और उत्तरी राजस्थान के कई जिले भी 200 किलोमीटर के घेरे में आते हैं। हिसार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, फ्लाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से उड़ान योजना के अलावा एग्जिस्टिंग सुविधाएं यानी इन सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध करना चाहता हूं, जो कि पहले से ही मौजूद हैं। थैंक यू। धन्यवाद। श्रीमती सीमा द्विवेदी। आज महोदय मैं अपना अवलंबनी लोक महत्व की जो हमारा विषय है वह देश भर में डीएपी यूरिया के साथ साथ गैर जरूरी सामान बेचने के लिए डीलरों के ऊपर भारी दबाव बनाए जाने के संबंध में। महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री की यह चिंता बनी हुई है कि हमारे देश के किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो। हमारी सरकार देश भर के किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी यूरिया को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराती है, परंतु कुछ कंपनियां जैसे उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में इंडोरामा कंपनी डीलरों के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाने का कार्य कराती है, परंतु अपनी कंपनी के निजी फायदे को लेकर डीलरों को डीएपी यूरिया के साथ साथ कंपनी द्वारा अन्य सामानों को देकर यह कहती है कि डीएपी यूरिया के साथ साथ इन हमारे
कंपनी द्वारा बने गए निजी सामानों को भी बेचिए। डीलर महोदय भयभीत होकर बेचने को मजबूर हो जाता है। किसान भारत की रीढ़ है। हमारी सरकार किसानों की आय कैसे बढ़े इसको लेकर के लगातार प्रयत्नशील है और समय समय पर उचित प्रयास भी करती है, जिसका परिणाम आज किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कंपनी और डीलरों की आपसी खींचतान का नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है और सरकार को सार्थक पहल पर भी रुकावटें आती हैं। आज किसान समय समय पर खाद प्राप्त हो रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों को समय समय पर सही मूल्यों पर खाद सरलता से प्राप्त हो सके, इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, कंपनियों द्वारा मनमानी को रोकने के लिए डीलरों पर टैगिंग को सम्मान न देने के लिए प्रयास करें, उनको निर्देश जारी करें ताकि किसानों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए खाद को उचित मूल्य पर किसानों को प्राप्त हो सके। महोदय, टैगिंग को रोकने के लिए आवश्यक कदम सरकार उठाए, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमती शांता छेत्री। Thank you, sir, for allowing me to speak. I would like to draw the kind attention of this August House that around 1980, a task force set up by the Government of India has found that more than 250 million metric tons of valuable topsoil and boulders are annually being washed down to the rivers and the valleys from Darjeeling, Sikkim, Himalayas alone. This will result to bleak future for the farmers of the hilly region unless some urgent measures are taken up. Therefore, I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honorable Agriculture Minister to take the help of the expert on this field for sustainable land use pattern in the Himalayas. Thank you, sir. Thank you. Dr. Santanu Sen. Thank you, respected Chair. My special mention is on need to study increasing cardiovascular diseases among young people. Until now, heart attack was thought to be a condition that only affected the elderly, and heart attack among the youth were considered as abnormal. However, the instances of heart attacks among people under 40s are on the rise, including young people in their 20s and 30s. This is a scary trend for a nation with the largest youth population in the world. India's specific data regarding heart attacks in people under 40 is sparse Indians suffer from cardiovascular diseases at a younger age as compared to other countries. As per the Indian Heart Association, 50% of all heart attacks in the Indian men occur under 50 years of age and 25% under 40 years of age. There has been a 3% increase in cardiovascular disease among Indian women from 1990 to 2019, while globally the rate of cardiovascular disease among women has declined. The rise in heart attacks is attributed to various reasons: onset of diabetes at an early age, rising rate of obesity, sedentary lifestyle, excessive drinking and smoking, consumption of drugs, hypertension and stress. Some studies have found an increase in heart attacks post-COVID. The government should encourage the youth to adopt lifestyle that may decrease the risk of cardiovascular diseases. There is a need to collect and study the data on occurrence of heart attack in people under 40 years of age. Appropriate trainings for conducting cardiopulmonary resuscitation, that is CPR, and emergency response to heart attacks should also be conducted, sir. Thank you very much. Thank you. Sri Sandeep Kumar Pathak, not present. Srimati Ranjit Ranjan, not present. Sri Harinath Singh Yadav. माननीय सभापति महोदय, मैं मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति और प्रदूषण युक्त भूमि के कारण मानव जीवन तथा सभी जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर संकट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अति महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें करोड़ों किसानों ने बड़े उत्साह के साथ अपने कार्ड बनवाए थे। बड़ी संख्या में कार्ड बने, परंतु आवश्यकता के अनुसार मृदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का अभाव दिखाई देता है। महोदय, भूमि का स्वास्थ्य और मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। प्रदूषित जल का मुख्य कारण भूमि प्रदूषण होता है। हमारे व आपके शरीर में अन्न, फल, सब्जी तथा भोज्य पदार्थ सभी मिट्टी और जल के माध्यम से ही पहुँचते हैं। प्रदूषित जल और प्रदूषित मिट्टी के कारण अनेक प्रकार के जानलेवा रोग फैल रहे हैं और देश कैंसर, हृदयाघात, लीवर, फेफड़ों जैसी अनेक घातक बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है। महोदय, भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है। मानव तथा सभी पशु पक्षियों आदि जीव जंतु की पोषण शक्ति घट रही है और रोगों से लड़ने की क्षमता घट रही है। अतः मैं भूमि व जल के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों के उपयोग को कम करके परंपरागत जैविक कृषि अपनाने पर सरकार को दीर्घकालीन नीति बनाने और मृदा परीक्षण के लिए कम से कम प्रत्येक विकासखंड पर एक मृदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की मांग करता हूं। इससे धरा स्वस्थ होगी, लोगों को स्वच्छ जल तथा पोषक भोज्य पदार्थ मिलेंगे, तभी स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत तथा सशक्त भारत की हमारी कल्पना साकार होगी। धन्यवाद। आबिर रंजन विश्वास। Sir, I thank you for giving me this opportunity, and my topic is vacancies under SC, ST, OBC categories in higher educational institutes. Sir, according to the Education Ministry, India's elite higher educational institutes like IITs and IIMs are far behind in fulfilling their commitments to ensure inclusivity in higher education. The Central Educational Institutions Reservations in Admissions Act 2006 mandates 15%, 7.5% and 20% quotas for SCs, STs and OBC students respectively. However, the intake of students under the reserved categories in IITs and IIMs are much lower than the mandated norms. The acceptance rate of applications for SCs, STs and OBCs in IIMs has been below 4% for the past 4 years. So IIM Ahmedabad received 200 PhD applications from SCs between 2018-19 and 21-22, but only 2 have been accepted. They got 78 applications from STs, out of which only 2 were accepted. Again, sir, during the same period, IIM Bangalore accepted 3 out of 188 applications by SCs and none out of the 52 applications from the STs were accepted. IIM Kolkata accepted 9 out of 219 applications by SCs, 219 applications by SCs, and IIM Lucknow accepted 9 out of 78. IIM Kozhikode accepted 2 out of 298, and Indore accepted 4 out of 97. So there is a serious underrepresentation of STs with only 2.5%, which is only 137 students out of 3,430 eligible applicants admitted across all IITs. Last year, 137 out of 3,430 ST students, candidates that is, and 574 out of 17,075 SC students secured admission. Less than 10% of all PhD candidates at IITs in 2021 were SCs. Even for OBC reservations, most of the IITs are below the mandated 27%. So, the government in this regard should take due notice and necessary steps to fulfill them. Thank you, sir. Thank you. Sri Samir Oraon. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने एक लोक महत्व के विषय को उठाने के लिए समय दिया है। झारखंड के गुमला में आयुष महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं माननीय आयुष मंत्री का ध्यान गुमला जिला में आयुष महाविद्यालय
स्थापित करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो आसपास के लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और पलामू जिले के प्राकृतिक वनस्पतियों से अनाच्छादित भूभाग से सटे हैं और करीब करीब बीच में ही स्थित है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी मुख्यतः जनजातीय समुदाय से आती है। स्थानीय जनजातीय आबादी हजारों वर्षों से अपनी स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने हेतु पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अनुसरण करती आई है और उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन से संपन्न रही है। इनकी उपचार पद्धति आयुर्वेदिक औषधीय चिकित्सा पद्धति से मेल भी खाती है। गुमला जिले में आयुष महाविद्यालय स्थापित होने से इन क्षेत्रों के युवकों युवतियों हेतु आयुष के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु भी एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो जाएगा। अतः प्रत्येक दृष्टिकोण से इस आयुष महाविद्यालय को स्थानीय जनता हाथों हाथ लेगी, जिससे इस क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। अतः सरकार से अनुरोध है कि सरकार यथाशीघ्र झारखंड के गुमला जिला में एक आयुष महाविद्यालय स्थापित करने की कृपा करे। धन्यवाद। डॉक्टर कल्पना सैनी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित किए जाने के अनुरोध करती हूँ। आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 4 जोनल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित किए जाने हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है कि भविष्य में समय समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संक्रमण जैसे कोविड-19 पर महामारी से निपटने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अतिरिक्त नई एंटीवायरल दवाइयों पर शोध, डायग्नोस्टिक किट एवं वैक्सीन व्यापक स्तर पर बनाई जा सके। सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का कोई भी संस्थान अभी तक उत्तराखंड राज्य में स्थापित नहीं है। अतः उत्तर राज्यों में संक्रमण रोगों की निरंतर निगरानी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उत्तराखंड के अंतर्गत रुड़की जिला हरिद्वार में स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से संक्रामक रोगों के निपटने हेतु प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आज के समय में ये अति आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 23rd December 2022. Thank you. Namaskar. Thanks for sitting till the last.